Good morning and welcome to the Himalayan Cup semi-final number one as Himachal FC take on the Uttarakhand side. Welcome everyone to the pavilion ground as we see Himachal FC warming up ahead of today's encounter, coming into this beating J&K by 1-0. We had four incredible quarterfinals over the past 2 days, and now it's time for two semi-final bouts this morning. Let's take a look at the Himachal lineup. Karandeep in goal, Winnerdeep, Lovepreet, Harpreet the skipper, Joel, Janio, Fahad, Abhay Gurung, Panmay, Mabha and Ajay. And on the bench it's Shubham, Neeraj, Karthik, Jojo, Deepu, Hridya, Renedy, Ankit and Kuntal. And on the other hand, fresh off a penalty shootout victory in the quarterfinals, it's Uttarakhand with their goalkeeper Virendra Pandey saving that penalty, although he was injured, managing to take them into the semi-finals. What a display from them! What a match that was between them and the Garhwal Rifles. But they have deserved this spot in the semi-finals. And let's take a look at their lineup. There is Pandey in goal, also the man of the match. Sharendra Negi had a good game. Rajveer, Lalit Bisht, Aditya Nautiyal, Sher Singh, the skipper. Tenzin comes back into the lineup. Virendra Thapa, Mayank Khatri, Manav Rawat, who had a very good game, and Aman Thapa. On the bench, they have Sachin Negi, Rishi Upadhyaya, Rahul Mehra. Drops to the bench, Ivan Reddy, Siddharth Rawat, Siddharth Lakeda, Mohammad Faizan, Adarsh, and Lalit Singh Mehta in goal. And today, alongside me, I would like to introduce my co-commentator, Mr. M.S. Negi. Welcome. और देहरादून के पेवेलियन ग्राउंड में शानदार मुकाबला शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं दोनों ही टीमें जा रही हैं मध्य रेखा की ओर। ब्लैक कलर में टीम होगी हिमाचल एफसी और ब्लू कलर में होगी टीम उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन। तो हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट फर्स्ट सेमीफाइनल, और ये मैच रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि एक टीम होम ग्राउंड पे खेलेगी। उत्तराखंड की टीम अपने मैदान में खेलेगी हिमाचल के खिलाफ। तो हिमाचल ने दिखाया था बेहतरीन खेल J&K के खिलाफ, और अब उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन ब्लू में होगी और ब्लैक में होगी हिमाचल। तो देहरादून के पेवेलियन मैदान में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट द हिमालयन कप ऑनरेबल चीफ गेस्ट जाएंगे इंट्रोडक्शन के लिए, और आप देख पाएंगे ये शानदार मुकाबला। और ये पहला सेमीफाइनल है, जीतने वाली टीम पहुंचेगी फाइनल में। तो बस कुछ मिनटों के बाद हम देख पाएंगे ये शानदार मैच। फिलहाल देख सकते हैं आप, मैच ऑफिशियल बीच में है। ब्लू कलर में है टीम, यह है कैप्टन शेर सिंह, 19 नंबर की जर्सी में होंगे कप्तान टीम के। और दो चेंज आज टीम में नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लगता है काफ़ी तैयारी के साथ उत्तराखंड की टीम आज हिमाचल को टक्कर देगी। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल देख रहे हैं आप मध्य रेखा पे बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है उत्तराखंड की देहरादून में। और ये खिलाड़ी जो आपको दिखाई दे रहे हैं चेंज के तौर पर लाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छी तैयारी है। भंडारी जो कोच है टीम के, उन्होंने बताया है कि वो होम ग्राउंड में बेनिफिट लेना चाहेंगे होम ग्राउंड का, यहाँ पे खेलने का। तो ये कैप्टन है शेर सिंह, ऑनरेबल चीफ गेस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हैं। और ये बहुत अच्छा सीन है, ग्राउंड थोड़ा सा अनइवन है, तो दोनों ही टीमों को थोड़ा सा कंट्रोल करने में परेशानी हो रही है गेंद को। लेकिन द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल देहरादून के पेवेलियन ग्राउंड में आप देख रहे हैं, और अभी इंट्रोडक्शन सेरेमनी। Absolutely great scenes here, as mentioned by my co-commentator. As the chief guest meets both the sides ahead of this semi-final, number one. What an occasion here in the Himalayan Cup, as Himachal FC take on Uttarakhand, who, as mentioned before, are playing at their home ground. That is always a lot of pressure and also a bit of an advantage as well. And what we like to see is both the sides taking a picture together. Don't see that often.
ये यादगार लम्हे हैं जो जीवन भर याद रहती है कि हमने उस सन इतने से में इतना खेला था और हमने इतने में आयोजन किया गया था। और ये यही युवा एक आने वाले There's great समय scenes पर here. कोई कहीं होगा, कोई बड़े मुकाम पर होगा, कई नए बच्चों को दिखा रहा होगा। इसी में With से both the teams taking the यही picture खिलाड़ी together हमारे with भविष्य होते the हैं। पूरे dignitaries भारतवर्ष as well. Don't often see में that. यही जब इनको ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, हिमालयन कप जैसा You टूर्नामेंट can see मिलता है, that तो a lot of smiling faces. जोश और जुनून पैदा होता है। But हमें once कुछ करना it's है time for अपने kickoff, लिए, अपने then राज्य there के लिए, will अपने देश definitely के लिए। be no दोनों love टीमों lost को बधाई। between these two बहुत ही sides who are बेहतरीन aiming for a एक spot in the final छायाचित्र of the दे रहे हैं। Himalayan Cup. फोटोग्राफर राकेश जी हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो खासतौर पे मीडिया का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सभी खिलाड़ियों का, कि सभी लोग जितने भी दूर दूर Time for the बैठे हैं teams to greet each इसका other. आनंद ले रहे हैं। क्योंकि एक जमाना था, मैं थोड़ा सा मैडम को बताना चाहूँगा जिसको, क्योंकि एक जमाना था कि 1939 का एक ग्राउंड है, हिस्टोरिकल ग्राउंड है Himanchal FC in their black strip and Uttarakhand in their blue strip. पेड़ होते थे, तो पेड़ों पर And बैठकर this promises to 10,000 be से an लेकर exciting 30,000 game तक पब्लिक this morning. विशाल का टूर्नामेंट के लिए तरसती थी। और समय बदला, दौर बदला, कोरोना काल ने वो चीज़ सब लुप्त कर दी है। Referee Jitendra Singh will be तो assisted उस जमाने में जैसे हमारे बगल में भाई साहब by बैठे his हैं, team. वो And बता see रहे थे कि the एक जमाने में skippers एक बॉल Harpreet क्रिकेट भी for हुआ करता था। Himachal. तो एक बेहतरीन जुनून था और उस जुनून को वापस लाने के लिए हिमालयन कप And Sher Singh का जो आगाज for किया गया Uttarakhand. सुभाष अरोड़ा जी और देवेंद्र जी के द्वारा, उनकी जितनी तारीफ की जाती है कम। तो बहुत ही बेहतरीन क्राउड रहता था, पूरा फुल ग्राउंड। और ऐसा All smiles between the referees as मुझे well. लगता है कि कुछ जल्दी ही 2-3 साल में आएगा कि यहाँ पर आज हम खुले में बैठे हैं। Jitendra Singh assisted by Tanveer Ahmed, Vinod Rai and Satchil Singh, दौर वापस आएगा, who is the fourth कंडीशन official, and भीड़ Deepak होगी, Negi, खुला होगा, क्योंकि पब्लिक होती the है तो match तभी वो commissioner this morning. काम होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन मैच आपके बीच कुछ ही छोरों पर लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। कैमरामैन सब रेडी हैं। अगर आपको देखना So final words here हिमालयन कप for either side before we start off this semi-final. गवर्नमेंट एफसी भी आप तय कर सकते हैं। 4 वेन्यू में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। और ये मैच शुरू होने वाला है, तो सारी जो तैयारियां हैं कल ली गई हैं। लियोम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैच है ये बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो खेलेगी फाइनल। और अब सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी कर ली गई हैं। तो आप देख सकते हैं, आप हिमाचल की टीम है ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में है उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम। और दर्शकों का अभिवादन करते हुए खिलाड़ी तो अपने होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज भी है। और जैसा दोनों कोच से हमारी बातचीत हुई है, तो हिमाचल के कोच का यही कहना है कि उनकी टीम को घर से बाहर खेलने की आदत ज़्यादा है और घर से बाहर जीतते आ रहे हैं। वो उत्तराखंड के कोच भंडारी का कहना है कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, उनकी टीम मजबूत है और एक बढ़िया मुकाबला होगा। सब लोग यही चाहते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पेवेलियन मैदान में चल रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट द हिमालयन कप, जिसका पहला सेमीफाइनल अब शुरू होने वाला है। रेफरी की नज़रें हैं घड़ी की सुइयों पर और देखेंगे समय और शुरू हो जाएगा मैच। तो विसिल के साथ किक ऑफ और गेंद को लिया है हिमाचल ने और ये गेंद बढ़ाई है उन्होंने अपने साथी के लिए, लेकिन पहले ही मिनट में हिमाचल की टीम बाएं फ्लैंक से कोशिश कर रही है अटैक करने की। तो हिमाचल के खिलाड़ी अच्छे तालमेल के साथ आगे जरूर बढ़े थे, लेकिन गेंद टच लाइन से बाहर थ्रो इन लिया हिमाचल ने। तो बहुत ही हाई वोल्टेज होने वाला है मैच, क्योंकि कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि वो इस मैच को हारे। फिलहाल हिमाचल की टीम मुंह बनाते हुए पेनल्टी बॉक्स के बाहर खिलाड़ी के पास गेंद है और वहाँ पर डिफेंडर से जूझ रहे हैं, लेकिन अच्छी ड्रिबलिंग, संतुलन खोया, गिर पड़े और बॉल जा रही है टच लाइन के बाहर। तो पहले मिनट में हिमाचल की टीम का अच्छा मूव था ये और थ्रो इन मिला है उनको। और थ्रो इन के बाद चेस्ट से ही गेंद को पास कर दिया साथी के लिए। ये ग्राउंडर आया, इतना अच्छा नहीं था, ये लॉब आना चाहिए था यहाँ पे। और शेर सिंह जो कप्तान है टीम के, वैसे मिडफील्ड में खेलते हैं लेकिन आज डिफेंस में है और इससे पिछले मैच में भी उन्होंने गढ़वाल राइफल के खिलाफ बहुत अच्छा डिफेंस किया था। तो एक अच्छा तेज़ तर्रार रोमांचक फुटबॉल आप देख पाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया है मैच। Absolutely, as mentioned by my co-commentator, it will be a game to remember. But which side will remember it most? That is what it's all about. Shailendra going for a clearance there, not really timing it properly. What a game he had in the quarter-final. Absolutely incredible. Was the centre back for Uttarakhand.
And definitely it is going to be one of those high voltage encounters like we had in the quarterfinals. Two of the four games going into a penalty shootout, one of them involving Uttarakhand, of course. But on the other hand, Himachal FC winning their game by just that solitary goal. And they have started off better in the opening proceedings here at the Pavilion ground. And as mentioned before as well, Himanchal FC have been used to playing all around the country, so this won't really phase them playing here at Dehradun, where Uttarakhand do feel at home. Now Himachal on the attack. Can they get the first proper chance of the morning? Shot taken from distance straight into the hands of Virendra Pandey, and it will take a lot to beat him. Good shot from distance taken by Fahad. Inside, left to right of the goalkeeper, and that could have been a problem for Pandey. What is important for these two sides is not to concede a goal early on. In a game like this, whatever game plan you have goes out of the window if you concede in the first few minutes. You just have to stay solid and make sure you get yourself into the game. Or this could be a chance now for Uttarakhand. One-on-one situation. Great save made, but after that, it is the offside flag which has been put up. Another look at it. Oh, that is a close call missed by both the defenders. And you have to say, Mayank Khatri should have put that away, but still good save by Karandeep. बहुत अच्छा मूव बनाया था। यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल के बीच चल रहा है ज़ोरदार मुकाबला, और दोनों ही टीमें जानती है इस मैच की इम्पोर्टेंस, और एक बहुत बड़ी अमाउंट जीतने वाली टीम को मिलेगी। 5 लाख रुपए प्राइज़ मनी का टूर्नामेंट है, और दोनों ही टीमें चाहती हैं वो फाइनल में पहुँचे। उत्तराखंड की टीम के लिए अपने होम ग्राउंड में जीत दर्ज करना ज़रूरी है, और थोड़ा सा प्रेशर भी है उनके ऊपर, और एडवांटेज भी है उनको होम ग्राउंड में। अनइवन ग्राउंड है ये, यहाँ पे बॉल को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दोनों ही टीमें शुरुआत से ही अटैकिंग मोड में है, और दोनों ही टीमें चाहती हैं कि वो जल्दी से जल्दी गोल करें। इस समय देख सकते हैं आप गेंद पर नियंत्रण, पीछे से गलत टैकल, रेफरी ने फाउल लिया है, और आज जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो मैच को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ खिलाएं। और अच्छा मैच चल रहा है, दोनों ही टीमों ने एक दो बार एक दूसरे के गोलकीपर को आजमाया है। तो उत्तराखंड के जो गोलकीपर हैं टाई ब्रेकर में अच्छा खेले क्वार्टर फाइनल में पांडे, और ये गोलकीपर हिमाचल के जिन्होंने अभी ये अच्छा सेव किया, हालांकि ऑफसाइड था लेकिन गोलकीपर का जो सेव था बहुत अच्छा था। फिलहाल गेंद को रखा जा रहा है फ्री किक के लिए। पहले 5 मिनट का खेल हुआ है और अच्छा मैच चल रहा है, अटैकिंग मोड में है दोनों ही टीमें, और ये लॉब आया जरूर था लेकिन कोई खिलाड़ी इसको ले नहीं पाया। डिफेंस अच्छा है दोनों ही टीमों का। तो अब एक बार फिर गेंद हिमाचल के पेनल्टी बॉक्स के आसपास है, और लगातार दबाव बनाती हुई उत्तराखंड की टीम हिमाचल के ऊपर। गलत पास था ये, और ये प्रेशर है, मैच का प्रेशर है खिलाड़ियों के ऊपर, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है वहाँ पे, और एक दो बार हिमाचल के खिलाड़ियों ने भी इस तरह ही गलत पास दे दिया था। तो अब आप देख सकते हैं उत्तराखंड की टीम बाएं फ्लैंक से करेगी अटैक, बाएं फ्लैंक से वहाँ पे डिफेंडर मौजूद है, डिफेंडर गेंद को जाने नहीं देंगे, गेंद जा रही है गोल लाइन से बाहर, तो गोल किक के लिए रखा जाएगा गेंद को। काफ़ी तेज तर्रार फुटबॉल खेल रही है दोनों ही टीमें। 5 मिनट 40 सेकंड का समय हुआ है, और एक मरतबा हिमाचल की टीम ने जो आजमाइश की है गोलकीपर पांडे की, और अब जो उत्तराखंड की टीम है उन्होंने भी थोड़ा अटैकिंग मोड में अटैक किए हैं। तो देखने वाली बात है, एक रोमांचक मैच, कौन पहुंचेगा फाइनल में, कौन सी पहली टीम होगी जो फाइनल में पहुंचेगी, इसका फैसला होगा इस मैच से। और अब हिमाचल का काउंटर अटैक बनता हुआ, हिमाचल के खिलाड़ी को देखते हुए, उसके फॉरवर्ड लाइन को देखते हुए डिफेंडर ने गेंद को गोल लाइन से बाहर किया। तो देखने वाली बात है कि क्या ये गोल किक है या फ्लैग किक है। तो ऐसा लगता है गेंद डिफ्लेक्ट होने के बाद गोल लाइन से बाहर गया था, तो अब गेंद को रखा जाएगा गोल किक के लिए। ये पांडे है गोलकीपर, बेहतरीन गोल कीपिंग किया था, और अब रिप्ले में देखते हैं किस तरह से। और ऐसा लगता है लास्ट मोमेंट पे हिमाचल के जो स्ट्राइकर है उनके पैर पर डिफ्लेक्ट हुई गेंद, तो ये गेंद को रखा जा रहा है गोल किक के लिए। पांडे आ रहे हैं, पांडे एक बेहतरीन गोलकीपर है जिन्होंने बहुत अच्छा सेव किया था क्वार्टर फाइनल में, और
अब सेमीफाइनल में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, गोल पोस्ट को सेव रखना है उनको। फिलहाल 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच, 6 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है और दोनों ही टीमें कोशिश कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की, लेकिन कोई बहुत अच्छा परफेक्ट मूव तो अभी नहीं बना है, लेकिन प्रेशर है दोनों टीमों पे। Absolutely rightly said there. It's a good start for either side. Himachal just looking slightly more ready for the occasion, but Uttarakhand will definitely come into their own. Very important to win that midfield battle. And they don't have Rahul Mehra today in the starting lineup to Uttarakhand. I felt that he was very impressive in that quarter-final as the game went on, especially in extra time. But for now, they have to deal without him. They're going to make their first proper attack of the morning. Oh, that is not the ideal situation for the goalkeeper, but Tarandeep does very well to just hold his composure. And so far, so good for Himanchal SC and Uttarakhand, and this promises to be a very close semi-final. Not going to give each other an inch. We know that Uttarakhand defense is not easy to break down. Himachal FC tried to do that this time round, but can only settle for a throw-in. There is the coach of Himachal FC looking on as they have another chance. It's played inside, and that could be a penalty decision, and it has been given. Within the Singh, the referee points to the spot, and Rohidas Chari is a happy man because his side have got an early penalty for hard going down the right-hand side, playing it inwards, and then the foul being committed. I think it was Abhay Guru who went down, but now it looks like Himachal can get the first goal of the semi-finals. And it looks like it will be the number 9, Mandha Kapoor, who has a chance to do so. And the hero, Virendra Pandey, the hero of the penalty shootout, has a penalty to deal with within the first 9 minutes of this semi-final. Pressure is on the striker, you have to say. This could set the tone for the rest of this semi-final. Mandha Kapoor stepping up for Himachal. And it's been saved! Virendra Pandey with a double save. In fact, my word, what a tournament he is having. And he has pulled out the stops once again. My goodness, what are we witnessing from this man? Take another look at it. Went the right way, made the save, and look at that. That has got to be put away, but he got up quickly and made sure to get the double save. This is heroic stuff from the number 1 of the Uttarakhand side. Absolutely incredible, and someone has gone down in the bargain, but Himachal will be kicking themselves for not taking this chance. We've got to take these ones in a big semi-final. Will this have a big effect on the rest of the game? It will definitely do Virendra Pandey some good, and his side will have a lot of confidence in him. Himachal need to break the deadlock soon, otherwise they will be a bit nervy as the game goes on. और लियोम हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा, जैसा लियोम कह रहे, हीरो ऑफ द क्वार्टर फाइनल पांडे, गोलकीपर, 2 शानदार सेव और बहुत बढ़िया गोलकीपिंग, निश्चित गोल हो जाता। आप देखिए रिप्ले में क्या शानदार सेव किया, और रिबाउंडर पर भी किक आ गया था, इसको भी सेव किया, और बिल्कुल एक बहुत लाजवाब इसे कहेंगे हम, और ट्रमेंडियस गोलकीपिंग बाय पांडे। बेहतरीन क्वार्टर फाइनल से जिस तरह उन्होंने ख़त्म किया था मैच को, वहीं से शुरू किया है, और 2 शेप कहेंगे, 1 पेनल्टी नहीं, उन्होंने 2 पेनल्टी बचाई इस मैच में। दूसरी बार भी किक लेने का फ्रीडम था वहाँ पे फॉरवर्ड लाइन को, लेकिन ये पांडे आपकी स्क्रीन पर हीरो अभी तक के उत्तराखंड के लिए, और आसान नहीं रहेगा हिमाचल के लिए गोलकीपर को बीट करना, जिस तरह से अब 2 गोल
हो जाते। दूसरी बार भी सेव किया, तो बहुत अच्छा मैच चल रहा है और हिमाचल की फॉरवर्ड लाइन बहुत तेज़ तर्रार फुटबॉल खेल रही है। वो मैच की इंपॉर्टेंस जानती है और यहाँ पर जो भी टीम जल्दी गोल करेगी उसको एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ये बड़ा मैच है और हारने वाली टीम को मुश्किल रहेगी। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुँचेगी। तो 5 लाख की प्राइज़ मनी का हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल, काफ़ी तेज़ फुटबॉल खेली जा रही दोनों टीमों के द्वारा। और हिमाचल की जो स्ट्राइकर है, उनकी जो लाइन है वो बहुत तेज़ है और बहुत अच्छा ड्रिबलिंग है उनका। तो कुल मिला के दर्शकों के लिए बहुत अच्छा मैच है और लाइव देख रहे हैं आप, तो बहुत मज़ा आ रहा है इस मैच में। और ये ग्राउंड में बहुत अच्छी आज रौनक है, क्योंकि टीमें बहुत तेज़ फुटबॉल खेल रही हैं और एक बार फिर टीम जो आगे बढ़ रही थी हिमाचल की स्कोरों का, अब ये डिफेंस लाइन गेंद को क्लियर करना चाहती है। लंबा थ्रू पास राइट हैंड साइड से, दाहिने छोर से, दाहिने फ्लैंक से अब गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं खिलाड़ी। और थोड़ा चेंज किया गया है उत्तराखंड की टीम में, इसलिए थोड़ा सा फॉरवर्ड लाइन के बीच थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर नहीं है। तो फिलहाल 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच और 12 मिनट का खेल हुआ है। पांडे की शानदार गोल कीपिंग की वजह से थोड़ा सा लीड नहीं ले पाई टीम हिमाचल की, और लकी रहे गोलकीपर उत्तराखंड के लिए, नहीं तो निश्चित गोल हो जाता पेनल्टी में। और दूसरा जो रिबाउंडर में भी किक लिया गया था उसको भी रोका पांडे ने। तो बढ़िया मैच चल रहा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पेवेलियन मैदान में। ये पहला सेमीफाइनल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट द हिमालयन कप मध्य रेखा पर खेल हो रहा है। गेंद पर कंट्रोल करना चाहते हैं दोनों ही टीमें, लेकिन बैक पास दिया है यहाँ पे उत्तराखंड ने और ये गलत पास हो गया, मिस पास। और ये मैच का हाई वोल्टेज मैच है, काफ़ी दबाव में है टीमें और थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जो 9 नंबर की जर्सी में हिमाचल के खिलाड़ी सबसे बेहतरीन, जिन्होंने गोल बनाए क्वार्टर फाइनल में अपनी टीम के लिए, प्ले मेकर की भूमिका में रहते हैं, उन्होंने पेनल्टी शूट मिस कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये अब मौका हो सकता है यहाँ पे, बट गोल कीपर यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर गए। और पहले भी देखिए आप रिप्ले में किस तरह आगे बढ़े थे। ये शेर सिंह ने लंबा लॉब निकाला था और खिलाड़ी यहाँ से निकले बहुत तेज़ी से, लेकिन गोलकीपर वहाँ पर आ गए और गोलकीपर गेंद को तो नहीं कलेक्ट कर पाए, लेकिन जो स्ट्राइकर थे उसको किक लेने का फ्रीडम नहीं मिला और ये वजह है कि गोलकीपर ने यहाँ पर भी अपना काम किया। तो दोनों गोलकीपर का परफॉर्मेंस शानदार है और मैच जानदार है, लाजवाब चल रहा है। दोनों ही टीमें अटैकिंग खेल रही है। देखिए आप किस तरह से सीधे, जिसे 2 ट्रेन आपस में टकरा गई हो, दोनों तेज़ गति से आ रहे थे और थोड़ा सा वहाँ पे हेल्प ले रहे हैं। तो ये स्ट्राइकर जो गोल बिल्कुल दाग ही देते, लेकिन गोलकीपर ने उनको किक नहीं लेने दिया, आज़ादी नहीं दी। तो पांडे के साथ साथ हिमाचल के गोलकीपर भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए, तो मैच हाई वोल्टेज है और मैच में सब कुछ देखने को मिलेगा। जो फुटबॉल, जो सॉकर जो जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस गेम है फुटबॉल, और फुटबॉल में जो तेज़ी, जो रोमांच होता है वो आज आप देख पाएंगे इस सेमीफाइनल में, क्योंकि दोनों ही टीमें लगभग एक शैली की हैं। तो आज गोलकीपर की भी परीक्षा होगी और स्ट्राइकर की भी आज देखी जाएगी स्पीड कैसा होता है। Absolutely, it has been a thrilling start to this semi-final. Quarter of an hour in, we have to say Himanchal has started the better side, but once you miss a penalty in the first few minutes of the game, then it's not easy to recover from. Mentally, you know that you should be ahead, but you're not. The shoulders will droop slightly off the player who has missed the penalty. Sometimes he tends to try a bit too hard to make up for it. There you see, doing exactly that. आज की बच्चे अभी But what's important for Himachal is to just keep calm. They know they're a quality side, and if they play to their potential, they will get more chances. Uttarakhand, on the other hand, have to take that penalty as a wake-up call. But look at this beautiful play down the right-hand side. It's played inside, and once again, Mamba Kapoor finds his nemesis at the moment, who is Virendra Pandey, who is a nemesis of a lot of strikers in the Himalayan Cup. Just add the number 9 of Himachal to that list. Beautiful play down the right hand side though. Trying to take that quickly there. Himachal and Uttarakhand, who were solid in defense in their quarter-final, have to now rethink their strategy, their tactics, and see how they can combat against this side, this Himachal side, who of course are an academy side and are raring to go in terms of getting this early goal.
Ball played into the box. Shot from distance is not the best one, and it's cleared away. Uttarakhand can't really get away from Himachal at the moment. There was a bit of a hand used there from Winnerdeep, and he does get called up for the foul. Yes, that's not a good tackle from him. As Uttarakhand keep going, and if they keep on hold on to that clean sheet rather, they will have a bit more of the confidence. And MS Negi, my co-competitor, said that there has been a bit of a change in the lineup for Uttarakhand, and that's why they're just struggling. I'm not sure why the change was made, but I would like to see Rahul Mehra in the starting lineup because he just holds that midfield, does the dirty work, also builds up play, runs with the ball. But there looks like there's a bit of a vacuum in the midfield without him, and Himachal are making the most of it. Here they are again, trying to play a 1-2. Fahad, not the best ball on that occasion from Abhay Gurung. Now Uttarakhand coming with the ball as well. Need to hold on to possession better. And learn slightly from their opponents, because that's exactly what Himachal can do. Hold the ball well, rotate it, not really panic when it comes to attacking. It has been quality बढ़िया on मैच show चलता so हुआ। far. स्कोर अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैच अच्छा चल रहा है और काफ़ी प्रेशर में दोनों ही टीमें। हिमाचल की फॉरवर्ड लाइन ज़्यादा बेहतर खेल रही है और उत्तराखंड जो सबसे मजबूत डिफेंस के लिए जाना जाता है, कई बार उन्होंने उनके डिफेंस को भेद दिया है। तो कह सकते हैं अभी जो मैच में जो पोजीशन है वो हिमाचल का ज़्यादा है और लगातार दबाव बनता हुआ एक बार फिर अच्छा सेव यहाँ पे पांडे का। तो पांडे अभी तक बचा के रखा है टीम को, उत्तराखंड की टीम को, लेकिन कब तक पांडे गोल सेव करते रहेंगे देखने वाली बात है। अब ये शानदार लॉब आया, आप देखिए क्या शानदार हेडर था और ये गोल कीपिंग लाजवाब। तो पांडे अभी तक हीरो ऑफ द मैच कह सकते हैं इन्हें, लेकिन मैच का रिजल्ट ही तय करेगा कि कौन हीरो है मैच का। अभी तो 0-0 की बराबरी पर चल रहा है, 19 मिनट का खेल हुआ है और अब गेंद आ गई है दूर से प्रयास। गोलकीपर के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि देख लिया था गोलकीपर ने किक लेते हुए, और जब स्ट्राइकर अचानक मारते हैं किक तो गोलकीपर सकते में आ जाते हैं। फिलहाल 0-0 की बराबरी पर अभी तक जो मैच हुआ है, इसमें हिमाचल की जो फॉरवर्ड लाइन है, स्ट्राइकर है, उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है और 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि गोलकीपर पांडे को सेव करना पड़ा। और आज एक दवाल जैसे क्रिकेट में कहते हैं राहुल द्रविड़ को दवाल, तो पांडे फिलहाल उत्तराखंड की जो टीम है उसके लिए दवाल की भूमिका में है और अभी अच्छे सेव किए उन्होंने। लेकिन जिस तरह फॉरवर्ड लाइन खेल रही है हिमाचल की, तेज तर्रार लाइन है और उनकी आज स्ट्रेटेजी अच्छी है, और जैसा उनके कोच का भी कॉन्फिडेंस आज देखने लायक था। उनका यही कहना था कि वो हिमाचल की जो टीम है वो आउट ऑफ हिमाचल ज़्यादा खेलती है और वहाँ पर खेलने का जीतने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आज लग भी रहा है इस ग्राउंड में और तालमेल बैठा लिया है। ग्राउंड अनइवन है, इस पर आसान नहीं है गेंद को कंट्रोल करना, लेकिन हिमाचल की टीम की परफॉर्मेंस अभी तक लाजवाब रही है। हालांकि गोल नहीं किया, अनलकी, और पेनल्टी मिस किया उन्होंने, तो बहुत बड़ा सेटबैक है ये पेनल्टी मिस करना फुटबॉल में। लेकिन फिलहाल मैच अच्छा चल रहा है, 0-0 की बराबरी पर चल रहा है। देहरादून के पेवेलियन ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं मैच। द हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट ऑल इंडिया लेवल का ये टूर्नामेंट है, जिसका ये सेमीफाइनल मैच है। और अब हिमाचल की टीम अटैक करती हुई पेनल्टी बॉक्स के बाहर से, लेकिन वहाँ पे वाल की तरह डिफेंडर मौजूद है, उन्होंने गेंद को जाने नहीं दिया। लेकिन गेंद एक बार फिर हिमाचल की ही फॉरवर्ड लाइन के पास है, तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, और यहाँ पर एक बार फिर खतरा है, डेंजरस प्ले, फिर गोलकीपर ने सेव किया। सो मैनी टाइम, कितनी बार, कब तक पांडे इस तरह गोलकीपिंग करते रहेंगे, सेव करते रहेंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल उत्तराखंड की टीम का तालमेल नहीं बन रहा है आज, और जिस तरह खेली थी टीम पिछले मुकाबले में उसके मुकाबले आज अभी कोऑर्डिनेशन कम दिखाई दे रहा है। हालांकि ये वन मैन एफर्ट है और ये खिलाड़ी चेंज के तौर पर आए टीम में, ये काफ़ी तेज़ी से गेंद को लेकर आगे जा रहे हैं और वहाँ पर गेंद को जरूर बढ़ाया गया है। खतरा हो सकता है यहाँ पे, डेंजर जोन में गेंद, बट गेंद को क्लियर किया गया है। गेंद टच लाइन से बाहर जा रहा है। रिप्ले में देखिए कैसे गेंद को लेकर, ये देखिए आप क्या शानदार लॉब आया था, अच्छा मौका था यहाँ पे, गोलकीपर ने भी लाजवाब प्रदर्शन किया है। तो अभी तक के मैच में जो भी
है वो हीरो फिलहाल पांडे ही है, गोलकीपर, जिन्होंने काफ़ी शेप किया, लेकिन अब ये थ्रो इन लेंगे खिलाड़ी उत्तराखंड के। और ये थ्रो इन काफ़ी दूर से लंबा थ्रो डालने का प्रयास पेनल्टी बॉक्स के अंदर, वहाँ पर डिफेंडर ने हेडर से गेंद को क्लियर किया है, लेकिन वहाँ पे चूक गए खिलाड़ी स्ट्राइकर जो थे फॉरवर्ड लाइन के। और अब काउंटर अटैक बनाने की कोशिश में टीम हिमाचल, और हिमाचल से गेंद डिफ्लेक्ट होने के बाद गई है, या उत्तराखंड से ऑफिशियल का डिसीजन आएगा। तो थ्रो इन जो मिला है ये लिया जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा लगता है हिमाचल के फेवर में थ्रो इन आया है। तो 22 मिनट का खेल हुआ है, 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच, और हिमाचल ने ज़्यादा मूव बनाया है। हिमाचल की टीम का पोजीशन ज़्यादा है, उन्होंने अटैक भी ज़्यादा किया है, लेकिन फुटबॉल में सिर्फ पोजीशन काउंट नहीं करता, स्कोर काउंट करता है। और ये अच्छा हेडर था यहाँ पे, क्योंकि बॉल गिरने के बाद अनइवन बाउंस से कहीं भी जा सकता था, तो डिफेंडर ने क्लियर किया गेंद को। अब मध्य रेखा के आसपास खेल हो रहा है, गेंद आ गई है उत्तराखंड एसोसिएशन के खिलाड़ी के पास। शेर सिंह है ये कप्तान टीम के, इन्होंने लंबा थ्रू पास निकाला जरूर है, लेकिन वहाँ पे कोई खिलाड़ी इसको रिसीव नहीं कर पाया। गोलकीपर ने कलेक्ट नहीं किया, हेडर के जरिए शायद आगे आ गए थे गोलकीपर लाइन से। तो अभी भी गेंद पर नियंत्रण की लेकर कोशिश हो रही है, काफ़ी दबाव में दिख रही है उत्तराखंड की जो टीम है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि शुरू से जिस तरह तेज़ फुटबॉल खेल रही हिमाचल की फॉरवर्ड लाइन ने थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में ला दिया है। ये प्रयास था, लेकिन काफ़ी नहीं है ये, और इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा उत्तराखंड की टीम को। उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम अभी तक कोई एक अच्छा मूव नहीं बना पाई है, लेकिन हिमाचल की टीम ने 3-4 मरतबा गोलकीपर की परीक्षा ले ली है, और पांडे जिन्होंने बेहतरीन गोलकीपिंग के जरिए अभी तक बचा के रखा है उत्तराखंड की टीम को। क्या आगे भी उनका इस तरह ही परफॉर्मेंस रहेगा? रिप्ले में देखते हैं। ये जिस तरह से यहाँ पे फाउल हुआ था, और ये हिमाचल के खिलाड़ी ने गलत टैकल किया था 10 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी उत्तराखंड के। तो रेफरी आज काफ़ी सख्त है, और वो जानते हैं बड़ा मुकाबला है, तो कहीं पर भी लिबर्टी नहीं दे रहे खिलाड़ियों को फाउल या टैकल की, गलत टैकल की। फिलहाल गेंद को रखा गया है फ्री किक के लिए, बिल्कुल मध्य रेखा के पास से फ्री किक लिया जाना है। 16 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी ने ये किक लिया है, और पेनल्टी बॉक्स के अंदर जरूर आ रहा है ये लॉब, लेकिन वहाँ पे हेडर और फॉरवर्ड लाइन के बीच थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आ रही है। उत्तराखंड की जो टीम है उसकी जो फॉरवर्ड लाइन है, स्ट्राइकर है, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आ रही है। और अभी हिमाचल का मुंह बनता हुआ एक बार फिर डिफेंस लाइन ने छोड़ा गेंद को सही तरीका यहाँ पर, क्योंकि अगर रोकते तो कंट्रोल हो जाता। Nicely done there by Aditya Nautiyal, just letting the ball run through. Very intelligent defender. He's the number 2 for Uttarakhand. And as my co-commentator MS Negi was mentioning, that how long can Virendra Pandey keep doing this? There's only so much that a goalkeeper can stop. Uttarakhand need to create some chances of their own. Can they do that here on the right hand side? Chance for a cross to come in. Fancy footwork. Cross does come in, not the best one. Neither is the clearance. And eventually cleared away by Joel. Lovely spread of play to the right hand side. Panmay. Oh, beautiful nutmeg from him. How skillful is he? Plays it inside. This could be a chance, but not if for Shailendra Negi. The fearless centre back just rushing in and putting his head on the line. There was a loose touch, of course, but now it's Uttarakhand coming with a counter attack. Not too much space here to put a cross in. Shot from distance, or is it a cross? Not too sure. Ball bobbles up. Now man Khatri gets pushed from the back, but wasn't really a foul. Bit of rhythm coming into this game now. Attacks on either end. Well, that is unfortunate. There's a bit of a slip there for Virendra Thapa. Was all over the place in the quarterfinals. What a game he had. It was a stop-start one, but eventually had a very good quarterfinal indeed. All got played into the channel. Should be dealt with. Manav Rawat with a bit of protection on his head. Plays it back to Khatri. He's looking for that ball. Trying to target Aman Thapa, but couldn't find him.
There is Shalindra Negi again. So calm and composed on the ball. As is Sher Singh. As is Nautiyal as well. This is good play from Uttarakhand. They're suddenly coming into their own in this game. A bit of a loose touch means that the tackle is allowed to come in from Lovepreet. But this is better from the side in blue. There is the coach, Ravindra Bhandari, looking on to the Uttarakhand side. He'll be happy with the last 5 minutes or so, the way they've attacked, the way they've moved the ball around. There is Shalindra Negi again. Very acrobatic for his size, of course. He uses his brains most of the time. Has a very good understanding of the game. Good pace shown on the right hand side here. Vinadeep plays it in. Loose touch once again from this time Panmay. Himachal now with a 1-2. Chance for a shot from distance. Instead the ball has been played, but nicely read there by Lalit Bisht, who also had a very good game. Vinadeep will continue for Himachal. Panmay decides not to cut inside, plays it back out, and that probably was the wrong decision, but he's got the ball back again. Patient play from Himachal FC right now. But eventually the ball won back by Sher Singh. And with that, it looks like Sher Singh is getting a bit of cramp. Remember, they went 120 minutes the day before in the quarterfinals. And there you see Vaman Rohidas Chari just having a few words with his players, giving them instructions. Acrobatic attempt there from Shalindra Negi. What a tournament he is having so far. Marshalling the defense of Uttarakhand. Vinadeep gets the ball back, plays it backwards, which Himachal FC don't really do. And once again, you see the long ball played. Negi will be there. Sher Singh looks like he's okay, goes for the clearance. And we hit the 30-minute mark here in semi-final number 1. In spite of there being penalties and quite a few chances for Himachal FC, it's still goalless. Oh my goodness, that would have been a huge error from Karandeep. He had the whole left side. Look at that. He could have just turned and gone onto his left, but he didn't go there and smacked Mayank Khatri, who would have hoped that the ball hit him in the chest and flew into the goal. और ये गोलकीपर ने जो शेप किया था तो किक लेना चाहते थे, सीधी लगी है वहाँ पे उत्तराखंड के स्ट्राइकर को, और थोड़ा सा मेडिकल हेल्प ली जा रही है, तो अच्छा मैच चल रहा है। और ये मैच जो खेला जा रहा है सेमीफाइनल, ये जो क्वार्टर फाइनल खेला था उत्तराखंड एसोसिएशन की टीम ने, लगभग उसी तरह का हो रहा है। और उनके खिलाफ ज़्यादा पोजीशन था गढ़वाल राइफल के पास, लेकिन क्वार्टर फाइनल में मैच टाई ब्रेकर में चला गया। और आज डिफेंस अच्छा कर रही है टीम उत्तराखंड की, और अच्छे डिफेंस के लिए जानी जाती है, लेकिन जो फॉरवर्ड लाइन है उसके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आ रहा है। और 31 मिनट का खेल हुआ है तो स्कोर नहीं हुआ है, अभी मौके ज़्यादा मिले हिमाचल को। हिमाचल की जो स्ट्रेटजी है बहुत अच्छी है, और उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो देखते ही बनता है। फॉरवर्ड लाइन जब
गेंद को लेकर आगे बढ़ती है तो वहाँ पर हर जगह पे खिलाड़ी मौजूद रहता है हिमाचल का, और डिफेंडर कहीं से भी गेंद को भेजते हैं तो फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी गेंद को ले लेते हैं। तो हिमाचल का बॉल पोजीशन अच्छा है, और अभी तक जो खेल हुआ है उसमें हिमाचल का ही दबदबा है, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम के बीच बहुत अच्छा तालमेल है और फॉरवर्ड लाइन बहुत अच्छा कर रही है। और 3 मरतबा ऐसा हुआ कि गोल हो जाता, लेकिन वीरेंद्र पांडे जो गोलकीपर है उन्होंने सेव किया है अभी तक उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम को। तो क्या ये वीरेंद्र पांडे के सारे ही उत्तराखंड की टीम अभी तक इस मैच में बनी हुई है, नहीं तो 1 या 2 गोल हो जाते हैं उनके ऊपर। लेकिन फिलहाल 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच देहरादून के पेवेलियन ग्राउंड में। हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच, हाई वोल्टेज मैच है ये, और दोनों ही टीमों में दबाव जरूर है इस मैच को लेकर, प्रेशर है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा उत्तराखंड की टीम में नज़र आ रहा है क्योंकि उनकी फॉरवर्ड लाइन बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रही है, और हिमाचल की टीम ने बहुत हमले किए हैं उत्तराखंड की टीम के ऊपर। और देखते हैं दूसरे हाफ में क्या कुछ स्ट्रेटेजी चेंज होगी। अच्छा कर रही है हिमाचल की टीम, हिमाचल एफसी का परफॉर्मेंस अच्छा है इस मैच में अभी तक। और यहाँ पर एक अजीब गरीब वाकया देखने को मिला, जब थ्रो इन ले रहे थे खिलाड़ी तो सामने हिमाचल के खिलाड़ी ने रोका उनको थ्रो इन लेने से। 32 मिनट का खेल हुआ है, 0-0 की बराबरी पर चल रहा है पहला सेमीफाइनल मैच ये चल रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का। ब्लू कलर में टीम उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन और ब्लैक कलर में है टीम यहाँ पे हिमाचल एफसी के खिलाड़ी बाएं फ्लैंक से हम गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए अच्छी फुटबॉल का मुजाहरा करते हुए खिलाड़ी हिमाचल के। अच्छा तालमेल देखिए आप किस तरह से 2 डिफेंडर के बीच से गेंद निकाल दी उन्होंने, हालांकि गेंद थोड़ा तेज़ निकाल दी और गोल लाइन से बाहर चली गई। तो कुल मिला के अच्छी फॉरवर्ड लाइन है और बहुत अच्छा मूव बना रही है टीम। बॉल बॉयज़ के हाथ में गेंद है। तो देहरादून के पेवेलियन ग्राउंड से ये पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। तो आप देखेंगे मैच ऑफिशियल के साथ, मैच रेफरी के साथ वीरेंद्र पांडे की कुछ बातचीत होती हुई, और शायद कुछ सख्त लहजे में कहा है रेफरी ने गोलकीपर को। तो फिलहाल 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच, और आधे से ज़्यादा समय हो चुका है। 45 मिनट का एक हाफ होता है, 33 मिनट का समय हो चुका है। और पेवेलियन मैदान में पहला सेमीफाइनल हिमाचल एफसी और उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के बीच। गोल अभी हुआ नहीं है, मूव बने ज़रूर हैं, और हिमाचल की टीम का ज़्यादा बॉल पोजीशन है, बॉल उनके पास ज़्यादा है, फॉरवर्ड लाइन उनका बढ़िया तालमेल के साथ आगे बढ़ रही है, और बिल्कुल आज़ादी नहीं है। उत्तराखंड की जो स्ट्राइकर हैं उनको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दे रही है हिमाचल की टीम। और एक बार फिर हिमाचल की टीम मुंह बनाते हुए बाएं छोर से यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में है, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, ये लॉब आया है बॉक्स के अंदर, क्या कोई इसको रिसीव कर पाएगा। और अब गेंद काउंटर अटैक कर सकती है टीम उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ी तेज़ी से तेज़ दौड़ लगाते हुए, लेकिन गेंद पर नियंत्रण खो दिया उन्होंने। और ये जो ग्राउंड है इसमें थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी है, और हालांकि दोनों ही टीमों के लिए जो कंडीशन है वो एक ही है, अगर अनइवन बाउंस है तो दोनों ही टीमों को इसे फेस करना पड़ता है। और फिलहाल होम ग्राउंड में खेलते हुए उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम पहले हाफ में कुछ बढ़िया खेल नहीं दिखा पाई है, लेकिन स्कोर नहीं हुआ है, ये उनके फेवर में है कि गोल अभी हुआ नहीं है। तो अब इस बड़े मुकाबले में गोल बहुत महत्वपूर्ण होगा, एक गोल भी अगर होता है तो एडवांटेज होगा उस टीम को। 10 minutes to go. What has been a very interesting first half of the semi-final so far, and it looks like Sher Singh may not be able to continue because the cramp is not getting better. And once this keeps happening, then a muscle pull could be on the cards. Not the best thing for the skipper. On the other hand, Vaman Rohidas Chari, coach of Himanchal FC, is looking as to how they can get this first goal, and with that the first change of the semi-final will take place. Sachin Negi will replace the skipper Sher Singh, who probably doesn't want to push it anymore. They may have a final to play in a couple of days time, and it's better not to keep going if you can see an injury coming sometime soon, and maybe he's already pulled his hamstring. But for now, the skipper will play no further part in the semi-final. Himanchal FC have not been able to score after that penalty miss. They have had a lot of chances. This could be it. This could be it for Himachal, but the offside flag has been raised. Not too sure if it was offside. We'll have to take another look at it.
Maybe just straying off. Good decision from the linesman. Uttarakhand have done well to come into this game after the first 15-20 minutes where they were absolutely dominated. And here are quite a few headers which don't really result in anything. We do have passages of play like that. Here's Bisht, hasn't been at his best today. Gives the ball away once again, but nicely won back by the substitute Sachin Negi. This time Bisht does give it away, but also gets a foul in the bargain. Good opportunity for Sachin Negi to come into this game as a substitute. Not often that you get chances in big games like this, especially replacing the captain Sher Singh. How will Uttarakhand react losing their skipper? We will find out. Chance down the right hand side. But once again, Shailendra Negi doing an exceptional job. Manav Rawat has options to the left but cannot find his teammate Aman Thapa. Now Himanchal on the charge. That is far from what is a good ball. In fact, going in for a throw, it shows that it's definitely not the best ball you'll see. But it happens on a ground like this. As my co-commentator was mentioning, it's quite uneven. Look at that, that's how he's keeping himself alert, ready and charged up. Virendra Pandey. Ball to the box has been cleared. Relentless pressure from Himachal FC, but they still haven't been able to break the deadlock. It's now the chance. Nicely done by Bisht once and twice. Here's Abhay. Plays it to Panmay. That could be a foul. No, this is the chance and this could be it. And it is it for Himachal FC. And it is the man who missed the penalty, Manbha Kapoor, who took a touch and swatted that into the top right corner. What a finish to make amends for what wasn't the best penalty from him. But now he has put that behind him and he has put his team ahead. Questions of whether there was a foul. No, that was just a trip from Shailendra Negi. And that is unfortunate. He's been so good so far. No. He just tripped. और जिस गोल की But तलाश what थी, a shot. गोल मिल गया है हिमाचल को। देख सकते हैं आप सेलिब्रेट करते हुए खिलाड़ी हिमाचल की ओर, जैसा हम आपको कह रहे थे। कब तक वीरेंद्र पांडे सेव करेंगे? फॉरवर्ड लाइन और डिफेंस लाइन दोनों ही जगह चूक हो गई। तो इस तरह से ये 1-0 की लीड मिल गई है हिमाचल को। और हिमाचल एफसी का ये गोल बनता था, काफ़ी देर से उनकी टीम अटैक कर रही थी और ये गोल बेहतरीन शानदार गोल था। और वहाँ पर 3 डिफेंडर थे लेकिन गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए और ये पहला गोल हुआ है। अच्छा गोल था ये। और फुटबॉल में गोल होना सबसे ज़रूरी होता है और दर्शक जो फुटबॉल को देखते हैं वो भी गोल का मूवमेंट देखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा गोल हो गया है और स्कोर हो गया है 1-0 इन फेवर ऑफ हिमाचल एफसी। और अब उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए और गिर गए, वहाँ पर कंट्रोल
नहीं कर पाए गेंद को। तो अपने होम ग्राउंड में खेल रही उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम अब थोड़ा सा तेज़ी लाएगी खेल में, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मैच है। बाएं छोर से एक बार फिर हिमाचल के खिलाड़ियों ने गेंद लिया है अपने पास, और अच्छी स्ट्रेटजी है हिमाचल की। उनकी फॉरवर्ड लाइन का कोऑर्डिनेशन बहुत लाजवाब है। और देखिए आप, इसी तरह की पोजीशन में गोल मार दिया था हिमाचल ने। 2-3 डिफेंडर से घिरे हुए थे स्ट्राइकर, फिर भी उन्होंने अपने लिए जगह बनाई और ये गोल पांडे रोक नहीं पाए। तो 1-0 की लीड हिमाचल के पास। पेवेलियन मैदान देहरादून का जहां पर चल रहा है, ये देखिए एक बार फिर हमला हुआ है, लेकिन इस बार गोलकीपर चौकन ने। द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। 1-0 की लीड हो गई है यहाँ पे हिमाचल के पास, और अब पहले हाफ का जो समय है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 41 मिनट का समय हो चुका है, और अगर 1-2 मिनट इंजरी टाइम जोड़ दिया जाए तो 6 या 7 मिनट का खेल और होना है। तो पहले हाफ में आखिरी मोमेंट में इस तरह गोल किया है हिमाचल ने। बहुत देर से मेहनत कर रही थी, उनकी फॉरवर्ड लाइन लगातार मूव बना रही थी। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और इसमें कोच की भी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरवर्ड लाइन को इतना एग्रेसिव खेलने के लिए कहा है, और डिफेंस भी अच्छा है। तो अब उत्तराखंड के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा खिलाड़ियों को, उत्तराखंड की टीम, क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंस है उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तालमेल की कमी है फॉरवर्ड लाइन में, और थोड़ा सा होम ग्राउंड का, जैसे लियोम भी कह रहे थे, एडवांटेज भी है और प्रेशर भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑफ साइड का डिमांड किया जा रहा था, ऑफ साइड मांग लिया गया है, और काफ़ी देर के बाद इसे AR2 ने ऑफ साइड दिया है। तो देखते हैं रिप्ले में, और खिलाड़ी आगे थे पहले ही, और बहुत आसान था ये डिसीजन देना, लेकिन काफ़ी समय लगा दिया इसमें AR2 ने। तो फिलहाल ऑफ साइड के लिए रखा जाएगा गेंद को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और ये पेवेलियन मैदान जहां पर खेला जा रहा है ऑल इंडिया हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका पहला सेमीफाइनल उत्तराखंड फुटबॉल और हिमाचल के बीच चल रहा है। बढ़िया मैच चल रहा है, और ये गेंद आई जरूर है, लेकिन डिफेंडर वहाँ पे कप्तान है जो टीम के, वो मौजूद है, और गोलकीपर ने कलेक्ट किया गेंद को। तो ये मैच 1-0 की लीड के साथ पहले हाफ के अंतिम चरण की ओर जा रहा है, और 43 मिनट के लगभग खेल हो चुका है। तो 45 मिनट के पहले हाफ में मुश्किल से 4 या 5 मिनट का खेल बाकी है। 1-0 की लीड है हिमाचल के पास। हिमाचल के खिलाड़ी एक बार फिर तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए, खतरे के क्षेत्र में है गेंद, लेकिन ये जो किक लिया 9 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी मुस्कुराते हुए, अच्छा नहीं था, और इसमें न तो किसी खिलाड़ी को अटैम्प करने का मौका मिला, और न ही गोलकीपर इसको ज़रूरत पड़ी उन्हें सेव करने की। तो बार के ऊपर से निकल गया गेंद, लेकिन मूव अच्छा था, और ये दर्शाता है जो फॉरवर्ड लाइन का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है, और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ा दबाव में नज़र आ रही है टीम उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन, और इस टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन स्ट्राइकर जो हैं, फॉरवर्ड लाइन जो है, उनके बीच थोड़ा तालमेल की कमी है, और कोई बहुत बड़ा हमला किया नहीं है। एक गोल से पिछड़ रही है टीम, तो क्या वापसी करेगी इस हाफ के बचे हुए समय में, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो 1-0 की लीड हिमाचल के पास, और हिमाचल के खिलाड़ी हर जगह मौजूद है, जहाँ पर भी गेंद जाती है वहाँ भी हिमाचल अच्छा ये ड्रिबलिंग करते हुए खिलाड़ी आगे बढ़े थे, और अब बैक पास देने के बाद पूरा कंट्रोल कर लिया है, गेम पर कंट्रोल कर लिया हिमाचल की टीम ने, और अच्छे कंट्रोल के साथ खेल रही है। मैदान में एडजस्ट हो गई है ऐसा लगता है, और बहुत बढ़िया। आप देखिए, आप खिलाड़ी मौजूद है और लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ पे भी गोलकीपर ने शेव किया, अभी भी खतरे के क्षेत्र में गेंद है, और अब जाकर गेंद आई है गोलकीपर के पास। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो गेंद आया है गोलकीपर पे, ये उत्तराखंड के ही खिलाड़ी से लगने के बाद आया है। तो क्या इस तरह का कोई सीन है? देखिए डिफ्लेक्ट हुआ गेंद, और नहीं, ये गेंद अभी देख रहे हैं हम रिप्ले में किस तरह से ये गेंद आई है। गोलकीपर आगे आए और गेंद को 2-3 बार डिफ्लेक्ट होने के बाद गोलकीपर ने लिया है। तो थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। तो आपको बता रहे 1-0 की लीड हो गई है। बहुत बड़ा मैच है, और VIP स्टैंड में आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये मैच कमिश्नर गिरीश नेगी आपकी स्क्रीन पर। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है, खिलाड़ी वहाँ पे गिरे हैं। तो काफ़ी तेज़ फुटबॉल खेली है हिमाचल की टीम ने, और हिमाचल की टीम का बॉल पोजीशन भी ज़्यादा है, और खेल पर उनका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा है। उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की जो टीम है उसकी फॉरवर्ड लाइन के बीच थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी। Another chance there for Himachal FC to double their lead, but once again it's Virendra Pandey who comes to the party. As we said, how many can he save? And the goal that they conceded was definitely unsavable. What a strike from the number 9, Ajay. And now with 2 minutes of added time, we saw that Shailendra Negi, who is the leader of the defense and probably the leader of the team now that Sher Singh is gone, was calling the entire squad, speaking to them, and probably
just giving them a word or two of advice. They will go into half time, but they need to make sure they go in not more than a goal down. Here's Rawat. Plays it to Aman Thapa. Very nicely done by him. He's going to take a shot from distance. Oh, and that is an awkward one for Karandeep. He's had a few of those today, mostly with the ball at his feet. Let's take a shot at this. Let's take a look at this shot. It's bounced, and suddenly, whoops. Well done by the keeper. If that was on target, then could have caused him a bit of a problem. Here's Ajay trying to get the better. And he does. Plays it inside. Beautiful footwork. Taking a shot, and what a block from Negi. Fahad on that occasion. Just cutting in and taking a shot with his right. Now he's played the 1-2. This could be a second goal, but no, not when Virendra Pandey is around. Makes that save and makes sure that his side don't go 2 goals down before half time. Lovely 1-2 on that left hand side between Fahad and Abhay Gurung. Virendra Pandey has been superb so far. और ये आखिरी समय चल रहा है, 45 मिनट का जो समय है वो हो चुका है। 1-0 की लीड है और एक मौका और बनाया था हिमाचल की टीम ने। अब इंजरी टाइम है 2 मिनट का, तो 2 मिनट से पहले हाफ के, और इस बचे हुए 2 मिनट में क्या हो सकता है। 12 नंबर की जर्सी पहले थापा, अच्छा इन्होंने अभी मूव बनाया था थोड़ी देर पहले, एक बार फिर गेंद पर नियंत्रण, लेकिन डिफेंस लाइन को नहीं भेज पाए और अब गेंद को कंट्रोल करना चाहते हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी, और थ्रो इन से संतुष्ट हो जाएगी हिमाचल की टीम, लेकिन यहाँ पर थ्रो इन भी नहीं देना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी रणनीति है, बहुत अच्छा कूल माइंड से खेल रहे हैं, कूल माइंड सेट से खेल रही है हिमाचल की टीम, और ये दर्शाता है कॉन्फिडेंस लेवल हाई है हिमाचल का। यहाँ पे मौका हो सकता था और ये मिस्टेक कर दी यहाँ पे उत्तराखंड एफसी के खिलाड़ियों ने, उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने। एक अच्छा मूव बन सकता था यहाँ पे। और इस प्रकार मध्याह्न का समय समाप्त हुआ और एक 1-0 पहले हाफ का खेल ख़त्म हुआ है, तो पहले हाफ में क्या कुछ हुआ वो तो आप देखेंगे हाईलाइट, लेकिन ये ब्रेक का टाइम है और जैसे ही दूसरे हाफ का खेल शुरू होगा लाइव कमेंट्री आपको सुनाएंगे। जिनके द्वारा बजाया गया बहुत ही बेहतरीन मैच यहाँ पर चलता हुआ आज का पहला सेमीफाइनल मैच हिमाचल प्रदेश वर्सेस उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश से की बढ़त बनाई गई। बहुत ही
Yes, yes. इस मैच के बाद आप Welcome अपने back to semi-final number one धर्म of अपने the स्कूल में Himalayan सकते Cup. हैं As जब तक Himachal FC lead टीचर by आपको 1 goal to nil versus Uttarakhand, हेल्प कर रहे हैं जैसे courtesy गवर्नमेंट of a देयर आर sensational strike ऑर्गेनाइजिंग सभी अपना from बेस्ट the ट्राई left कर रहे foot of हैं Ajay, the number अभी 9 मैच of का सेकंड Himachal, हाफ who खत्म होने जा रहा है had his penalty saved by Virendra Pandey early on in the game, but then made चार amends with पॉइंट that. And Uttarakhand, you can विक्टर see, के पास are है still in this game very much so, but they need to create more chances. Let's take a look at और that goal. बाकी की टीम को Sharinder मैच Negi का just slipping slightly, giving so much of time to Ajay.
हमारे बीच सीनियर पत्रकार देवेंद्र बिजी पहुंचे, उनका भी Take हार्दिक that अभिनंदन touch, स्वागत। turn, and smack it into the top right corner. One of the best goals we've seen. Brilliant touch and superb चलती मैच finish. का आनंद लीजिए। It's been mostly Himachal who have created the chances in the first half. They will want to put this game to bed, but for Uttarakhand, they're still in it. They need to create some more chances in the final third. So it's time for Jatinder Singh to get us underway in semi-final number 2. 45 minutes left for Uttarakhand to get an equalizer. And if they do, then we could go into extra time once again. Rahul Mehra comes in now for Mayank Khatri. I think this is how they should have started. But let's see how things can change with Rahul Mehra in that midfield. No change for Himachal FC during the half-time interval. There is Rahul Mehra on the left-hand side looking for the ball towards Rawat. Doesn't find him though. Very important for Uttarakhand to not be too hasty in attack. Yes, they have to build it up and just get into their own, play their own style of football rather than getting forced into playing the style of football that Himachal FC are playing, which is quick turnovers, good attacking football, movement from the attacking players. Uttarakhand, on the other hand, have a different kind of style and they need to stick to that. There is Negi, just gets a touch on it, cleared away. Misjudged. Now after that bounce, whenever the ball bounces, then you don't really know how high it's going to go. Sometimes it just dies on you. तो बहुत शानदार चल रहा है मैच और अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं दूसरे हाफ का खेल शुरू हुआ है और ऐसा लगता है दूसरे हाफ में थोड़ी सी बदली हुई रणनीति है उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम की और भंडारी ने शायद अपनी टीम की फॉरवर्ड लाइन को बताया होगा कि उनके पास आक्रमण करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक गोल से पीछे चल रही है टीम उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन और इस गोल से थोड़ा सा बैकफुट पर है टीम उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन क्योंकि वो होम ग्राउंड है और ऐसा माना जा रहा था जैसे कोच ने भी हमें बताया था अपने उनकी एक बाइट ली थी तो भंडारी का यही कहना था कि उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज है और उनकी टीम अच्छी फॉर्म में है अच्छी लय में है लेकिन जैसा हमारे साथी कमेंटेटर ने भी कहा एडवांटेज के साथ थोड़ा प्रेशर भी रहेगा और उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम ज़रूर अच्छा खेल रही है लेकिन फॉरवर्ड लाइन में कोऑर्डिनेशन पहले हाफ में ख़ास देखने को नहीं मिला और ज़्यादातर डिफेंस करना पड़ा उत्तराखंड की टीम को और गोलकीपर वीरेंद्र पांडे ने कुछ अच्छे शेव किए नहीं तो ये स्कोर लाइन जो 1-0 है ज़्यादा भी हो सकती थी। अब देखते हैं इस दूसरे हाफ में क्या उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम कुछ बेहतर करेगी ये देखने वाली बात है क्योंकि अब ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है नॉकआउट है और जीतेगी जो टीम वो पहुंच जाएगी फाइनल में और इस तरह के फुटबॉल टूर्नामेंट में फाइनल खेलना एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी किसी भी टीम के लिए क्योंकि ये देहरादून के पेवेलियन मैदान में ऑल इंडिया फुटबॉल कप द हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का एक बड़ा मैच है और इस मैच को जीतना हर टीम का सपना होता है फाइनल में पहुंचना तो निश्चित तौर पर इसका प्रेशर भी है टीमों पे लेकिन हिमाचल की टीम की फॉरवर्ड लाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर कर रही है और क्या इस छोर से उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। इस छोर से हिमाचल की टीम ने कई मूव बनाए और कई बेहतरीन सेव किए गोलकीपर पांडे ने लेकिन मैच में जो स्थिति है वो अभी हिमाचल के ही फेवर में है। अभी 3-4 मिनट का खेल हुआ है और थोड़ा यहाँ पे टैकल जिस तरह से किया था हिमाचल के डिफेंडर ने मुझे लगता है रेफरी ने वहाँ पे कुछ फाउल लिया है और फिलहाल मैच जारी है। 4 मिनट का खेल हुआ है अभी दूसरे हाफ का और उत्तराखंड की टीम थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक बदली हुई स्ट्रेटेजी के साथ खेल रही है क्योंकि पहले मिनट में ही उन्होंने मूव बनाया है और अभी आप देख सकते हैं मैच
अच्छा है और ये सारे जो खिलाड़ी हैं इसमें पेनल्टी बॉक्स के आसपास हैं हिमाचल के, क्योंकि यहाँ से एक किक लिया जाना है और अगर एक किक स्विंग होता हुआ घूमता हुआ आता है तो मुश्किल हो सकती है। और अच्छा किक आया है, खतरा हो सकता है और निश्चित तौर पर बढ़िया फुटबॉल देखने को मिल रही है। और अब फुटबॉल का जो रोमांच है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब जो मैच हैं वो अंतिम चरण में है। कल थर्ड प्लेस के लिए मैच होगा और परसों खेला जाएगा फाइनल। तो देहरादून जो राजधानी है उत्तराखंड की, इस पेवेलियन मैदान में आज एक दिलचस्प हाई वोल्टेज मुकाबला। और ये कोच वामन हैं और गोवा के रहने वाले हैं, हिमाचल एफसी के कोच, जिन्होंने बताया था कि उनकी टीम को आउट ऑफ हिमाचल खेलने की ज़्यादा आदत है और जीतने की आदत है। और आज दिख भी रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे हिमाचल का। और हिमाचल की टीम के पास लीड कर रही है 1-0 से। लेकिन अब इस हाफ में ज़रूर ऐसा है कि उत्तराखंड की टीम थोड़ा सा बदली हुई नज़र आ रही है और दिखाई दे रहा है उनकी फॉरवर्ड लाइन में तालमेल थोड़ा सा बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रही है और उनके पास विकल्प भी नहीं है। भंडारी जो कोच है वो जानते हैं कि जितनी जल्दी गोल उतारेंगे उतना ही अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि ये जो लीड है ये तो डिफेंड की जा सकती है, लेकिन अगर एक और गोल होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ा मुकाबला है। फिलहाल हिमाचल की टीम 1-0 से आगे है, लेकिन दूसरे हाफ में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है दूसरे हाफ में। और गेंद को रखा है गोल किक के लिए, गोलकीपर आ रहे हैं इस किक को लेने के लिए। तो तेज़ तर्रार फुटबॉल का मुजाहरा कर रही हैं दोनों ही टीमें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पेवेलियन मैदान में हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। ब्लू कलर में है टीम उत्तराखंड और ये धीमे से गेंद बढ़ाई उन्होंने, लेकिन स्कोर लाइन जो है वो हिमाचल के फेवर में है। बाएं छोर से आगे बढ़ना चाहते हैं खिलाड़ी, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को टच लाइन से बाहर कर दिया। 1-0 की लीड के साथ हिमाचल का पलड़ा अभी भारी है, लेकिन इस हाफ में जो शुरुआत हुई है वो थोड़ा सा तेज़ खेल रही है टीम उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन। और वो जानते हैं कि जितना अटैक करेंगे उतना ही डिफेंडर से भी गलतियां होंगी और मौके बनेंगे। देखने वाली बात है ये गोल जो किया है हिमाचल ने, क्या उत्तराखंड की टीम इसको उतार पाएगी। दूसरे हाफ का खेल चल रहा है और 6 मिनट का खेल हो चुका है। यहाँ पे मौका बन सकता है, खतरे के क्षेत्र में थी गेंद, लेकिन इसी तरह के मौके पर हिमाचल ने गोल कर दिया था जब पहले हाफ में। और अब काउंटर अटैक करती हुई हिमाचल की टीम, हिमाचल के ये खिलाड़ी बहुत तेज तर्रार हैं, प्ले मेकर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि आज इनसे पेनल्टी मिस हुआ। अब वीरेंद्र पांडे जिस तरह के गोलकीपर हैं वो बहुत अच्छी गोल कीपिंग की उन्होंने, और यही वजह है कि जो स्कोर लाइन है। अब ये हमला बनता हुआ हिमाचल का, खतरा हो सकता है यहाँ पे, और ये स्लाइडिंग सेव शानदार वीरेंद्र पांडे, बहुत अच्छा उनका ये सेव, स्लाइड करते हुए गेंद को लिया उन्होंने। और अब काउंटर अटैक बना रही है टीम यहाँ पे उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की। और जब गोलकीपर गोल रोकते हैं तो फॉरवर्ड लाइन को भी जोश मिलता है और वो भी समझते हैं मैच की इंपॉर्टेंस। फिलहाल ये गेंद बढ़ाई गई है, पेनल्टी बॉक्स से थोड़ा बाहर आई है गेंद, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को क्लियर किया। लंबा लॉब लगाकर गेंद जा रही है टच लाइन से बाहर, मध्य रेखा के पास इस समय गेंद है और थ्रो इन करेंगे यहाँ पे खिलाड़ी उत्तराखंड के। तो ये कह सकते हैं कि इस हाफ में, ये दूसरा हाफ जो शुरू हुआ है, इसमें थोड़ा सा उत्तराखंड की जो फॉरवर्ड लाइन है उन्होंने अपने गेम में प्लान चेंज किया है और थोड़ा तेज़ी। अब देखिए क्या शानदार शेप किया यहाँ पे वीरेंद्र पांडे ने, और अब गेंद आ गई है हिमाचल के हाथ में। रेफरी की विसिल बजी है और देखने वाली बात है क्या ये ऑफ साइड था, यानी जो डिसीजन है वो किसके फेवर में जाता है रिप्ले में दिखाई देगा। और गेंद को तो रोका था, पर मुझे लगता है फाउल लिया है, जिस तरह से लगातार फिजिकली टैकल कर रहे थे वहाँ पे स्ट्राइकर। तो अब गेंद को रखा गया है किक के लिए, किक लेंगे खिलाड़ी हिमाचल के। और 1-0 की लीड के साथ दूसरे हाफ की शुरुआत हुई है। 5-7 मिनट का खेल हुआ है, दर्शक काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस मैच को और आवाज़ें आप सुन सकते हैं। कोच तो हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं खिलाड़ियों पर, और वो भी एक अलग ही सीन होता है फुटबॉल में, बाकी खेलों में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल खेल जारी है और यहाँ पर गेंद आगे आ गई है पेनल्टी बॉक्स के पास, वहाँ पे नेगी मौजूद हैं। तो गोलकीपर को देखेंगे आप, बहुत व्यस्त हैं आज गोलकीपर वीरेंद्र पांडे, क्योंकि कई मरतबा उनके गोल पोस्ट पर हमला हुआ है और कई मरतबा उन्होंने शेप किया। एक मौका जरूर ऐसा था जब नज़दीक से किक लिया गया। एक बार फिर खतरा हो सकता है, हिमाचल के खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के अंदर घुस गए हैं और अब यहाँ पर आज़ादी मिलेगी किक मारने की या नहीं। और ये क्या लाजवाब, बेमिसाल, ग्लोरियस शॉट, मैग्निफिसेंट एफर्ट एंड स्कोर नाउ 2-0 इन फेवर ऑफ हिमाचल एफसी। बहुत अच्छा किक था ये, और कह सकते हैं हम कि जो स्कोरर को चाहिए होता है, एक स्ट्राइकर को जो चाहिए होता है मौके पर गोल मारना, वो दिखाया आज हिमाचल की टीम ने। सारी टीमों को एक मैसेज दिया है उन्होंने, जिस तरह उनकी फॉरवर्ड लाइन है, बिल्कुल क्विक रिस्पांस, बिल्कुल क्विक, कोई मौका नहीं, डिफेंडर के रहते रहते उनके सामने ही गोल मार दिया। और पहला गोल भी इसी तरह से, देखिए आप, डिफेंडर उनके सामने थे, 3 डिफेंडर आसपास थे और ये उन्होंने किक भी इतना एंगुलर शॉट लिया, लाजवाब गोल था ये, और इससे बेहतरीन फुटबॉल में कुछ हो नहीं सकता। तो आज हिमाचल की टीम बदली है।
What a sensational goal there from Fahad. Shalendra Negi beaten. After that, he took on Aditya Nautiyal. And how about that for a strike into the top right corner? If you have to beat Virendra Pandey, then you have to put a postage stamp to him. And that is exactly what Himachal FC have done. Both the goals have come because of strikes of the highest quality. Gone to the top right corner and leaving the superb goalkeeper with nothing to do apart from stop and stare in awe. And now this should be the game for Himachal FC. Uttarakhand did have one good chance in this half, but it was more of a half chance. And if you don't take those against a quality side like Himanchal FC, then you will be falling behind in the game, and they are behind by a couple of goals now. Fahad has been really good today, and that goal just tops it off. Virendra Thapa has not been too involved so far. They've had his number, but they will keep fighting here. Uttarakhand. 10 minutes in, they really need to get at least one goal back in the next 10 minutes or so. Chance now from this free kick. Tenzin Dan, who started today, hasn't had too much of an impact. Will be taking this one. Good opportunity to put something into the box. Only 3 players in the box. There need to be more when you're chasing a game. Tenzin puts the ball in, and the header from Negi will be comfortably taken by Karandeep. This is what I mean. If someone was there at the first post, then maybe they could have attacked that. Ball also needed to be better from Tenzin. Not much for the goalkeeper Karandeep to do so far this morning. And don't forget that this is semi-final number 1, and semi-final number 2 will come up for you later on. But this could be the end of semi-final number 1, but it was offside before Ajay could miss it. Garwal Heroes will be taking on the Assam Rifles in the 2 p.m. kickoff, and good decision from the linesman. It was definitely just a tad offside there, Ajay, and they're looking to put this game to bed now. Himachal FC. Manav hasn't got too much of the ball today. Now he plays it to Sachin Negi. Beautiful ball from him. Sachin Negi could have also started. He had such a good game the other day. And the Thapa will earn a corner because of Joel. This is another opportunity, and the ball needs to be put in nicely now from Uttarakhand. It looks like it will be within the Thapa to take it. Tenzin shifted off set piece duty. Can he put in something special? As we inch closer to the hour mark. Thapa puts the ball in, which is a disappointing one. More people to aim at in the box this time around, but he wasn't able to find anyone. And now Fahad takes on his man and keeps going and keeps going and will keep going just as Virendra Pandey comes in, swoops in and makes sure that number 3 doesn't come so easily. Long ball's not working for Uttarakhand at the moment. Turning out to be a tough morning for them. Rahul Mehra playing on the left hand side in
instead of the central midfield. Sachinegi looking for a ball in. A decent one, but too high for the goalkeeper. Great glove work by Karandeep. Now hitting the 60-minute mark. It's looking bleak for Uttarakhand if they don't get a goal anytime soon. And of course, anything can change in the game of football. And that is a very bad challenge from Bisht, but no foul, says the referee. Rawat now has Thapa towards him, does not play Thapa. He gets the ball back, now tries to play to Thapa, and I think it was a little too late for him. Got to be better there. You have to feed in. Your strike partner decided not to. And someone is down now. It looks like it's Fahad. He has stayed down after making some mazy, quick, incisive runs as Fahad. Let's take a look at that challenge. Did get the ball, but absolutely swiped the man out. Dignitaries enjoying the morning of football. और देख रहे हैं आप, बहुत शानदार मैच चल रहा है और हिमाचल एफसी ने बिल्कुल मौके को ताड़ते हुए दूसरा गोल दाग लिया है। तो अब उत्तराखंड के खिलाड़ियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो 2 गोल उतारने हैं बाकी बचे हुए समय में अगर पहुंचना है फाइनल की दौड़ में। बहुत अच्छा रोमांचक मुकाबला चल रहा है। देहरादून के पेवेलियन मैदान से आप इस मैच को देख रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जिनका ये ऐतिहासिक मैदान है, बड़े बड़े टूर्नामेंट का गवाह पेवेलियन मैदान, जहां से आपको दिखा रहा है ये मैच रोमांचक चल रहा है, तेज़ फुटबॉल खेली जा रही है, लेकिन उत्तराखंड की टीम गोल करने में कामयाब नहीं हुई है। हिमाचल एफसी की फॉरवर्ड लाइन का तालमेल देखते ही बनता है। शानदार फिनिशिंग के साथ 2 गोल की लीड है उनके पास। तो आपको दिखा रहे पेवेलियन मैदान से एक बार फिर मौका है हिमाचल के खिलाड़ी बाएं फ्लैग से, आज़ादी नहीं मिलेगी, नेगी है वहाँ पे डिफेंडर, लेकिन अच्छा तालमेल है फॉरवर्ड लाइन के बीच। एक बार देखिए आप, फिर गेंद आ गई है हिमाचल के पास। हिमाचल के खिलाड़ी बॉक्स के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और ये यहाँ पर गिरे हैं जरूर, हालांकि बहुत वैसा टैकल नहीं था, ये खिलाड़ी थोड़ा अपनी स्पीड से भी गिरे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है मैच रेफरी वहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं। तो पेवेलियन मैदान में चल रहा है पहला सेमीफाइनल और अभी तक डोमिनेट कर रही है टीम हिमाचल, और हिमाचल की टीम जो डोमिनेट कर रही है उनकी जो आकर्षक फॉरवर्ड लाइन है, तेज़ फॉरवर्ड लाइन है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है फॉरवर्ड लाइन के बीच और स्कोरर बहुत हैं। ये कोच भंडारी आज बिल्कुल परेशान होंगे क्योंकि टीम की जो परफॉर्मेंस है अभी आप देख रहे हैं 0 के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रही है और ऐसा माना जा रहा था कि उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम को लाभ है, उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम को लाभ की स्थिति में है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं, अभ्यास करते हैं। लेकिन जो मैच की स्थिति है इसको बिल्कुल हिमाचल के कोच ने जैसे अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी टीम को आउट ऑफ हिमाचल खेलने का, जीतने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो दिखाया भी उन्होंने। ये फ्री किक मिला है, अब इस फ्री किक पर क्या कुछ होता है देख सकते हैं आप। पूरा जो दोनों टीमों के खिलाड़ी हैं उनका एक जगह ही इकट्ठा हो गए हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है, देखिए कितनी लंबी बॉल बनी है। फ्री किक 18 नंबर की जर्सी अभय ने लिया जरूर है, फॉरवर्ड वहाँ पे अच्छी प्लानिंग थी, देखिए हल्का किक लिया था, एक खिलाड़ी वॉल से आगे निकल कर गया था और गोल मारना चाहता था, लेकिन गोलकीपर पांडे जो काफ़ी समय तक अपने गोल पोस्ट की रक्षा करते रहे। लेकिन जिस तरह की फॉरवर्ड लाइन है हिमाचल प्रदेश की, 2-0 की लीड है उनके पास और पेवेलियन मैदान से आप लाइव देख रहे हैं मैच। तो बहुत अच्छा चल रहा है मैच, अच्छी फुटबॉल खेली है आज हिमाचल ने और ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की जो टीम है उन्होंने 2 चेंज भी किए अपनी टीम में, फॉरवर्ड लाइन को उन्होंने मजबूत बनाया, वहाँ पे थापा के अलावा एक और खिलाड़ी को मौका दिया, एक सब्स्टिट्यूट चेंज किया जाएगा ऐसा लगता है और फैज़ान को बुलाया जाएगा, आदित्य नोटियाल को बाहर बुलाया जाएगा और फैज़ान जाएंगे अंदर, ये चेंज होगा। लेकिन फिलहाल खेल जारी है, 2-0 से आगे चल रही हिमाचल एफसी की टीम और ये मुकाबला चल रहा है जोरदार। उत्तराखंड के जो फॉरवर्ड लाइन है उनको कुछ तेज़ी दिखानी होगी, कुछ मूव बनाने होंगे क्योंकि दूसरे हाफ का भी लगभग 20 मिनट का खेल होने वाला है और 2-0 की लीड डोमिनेट कर रही है इस समय हिमाचल की टीम और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इनकी फॉरवर्ड लाइन का है। स्ट्राइकर बहुत तेज़ तर्रार हैं और उनके बीच कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है और ऐसा लगता है बिल्कुल कोई बड़ा टूर्नामेंट जैसे पहले से लगातार खेलते हुए आ रही हो टीम का तालमेल देखकर ऐसा लगता है जैसे काफ़ी लंबे समय से साथ खेल रही है, जो कोई कैंप किया है। ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी तो नहीं है हिमाचल एफसी में, लेकिन अच्छा है तालमेल, फॉरवर्ड लाइन बहुत अच्छी है और अभी तक जो मैच की स्थिति है उन्हीं के फेवर में है। 20 मिनट का खेल लगभग हुआ है, 2-0 से आगे हिमाचल के खिलाड़ी। एक बार फिर मध्य रेखा से दाहिने फ्लैंक पर गेंद को पहुंचाया गया है और दाहिने
छोर से अब आक्रमण किया जाएगा, यहीं से ज़्यादा मूव बना रही है टीम, लेकिन गेंद को छीना है वहाँ पे उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने। उत्तराखंड के खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को, अब ये देखिए बहुत अच्छी रणनीति है उनकी। उनकी टीम जो है, स्ट्राइकर जब हाफ में थे तो लंबा खेला गेंद को और गेंद पहुंचा दी अपने साथियों पर। तो फिलहाल हिमाचल के खिलाड़ी एक बार फिर मुंह बनाते हुए बाएं पैर से लिया गया है, किक खतरा हो सकता था यहाँ पे, अभी भी गेंद खतरे के क्षेत्र में है, क्रॉस आया है, ओहो व्हाट ए कलेक्शन, व्हाट ए कलेक्शन, मैग्निफिसेंट एफर्ट बाय पांडे, बेहतरीन बचाव किए हैं और आज एक दीवाल वाल की तरह काम कर रहे हैं पांडे। देखिए आप रिप्ले में किस तरह से ये बाएं पैर से किक लिया था और ये अच्छा क्रॉस आ गया था, लेकिन गोलकीपर का जो परफॉर्मेंस है देखते ही बनता है। हालांकि शून्य के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रही टीम, लेकिन पांडे आज भी हीरो हैं, क्वार्टर फाइनल में भी हीरो थे, सेमीफाइनल तक लाए इस टीम को, और इस मैच में शून्य के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रही है टीम। तो बहुत जल्दी गोल करना होगा उत्तराखंड की टीम को अगर इस मैच में बने रहना है, क्योंकि 65 मिनट हो चुके हैं और जिस तरह की लीड है तो ये मैच 90 मिनट में ही खत्म हो जाएगा अगर इस तरह की लीड रहेगी। तो यहाँ पे गिरे हैं स्लाइड, ये जो टैकल किया था खिलाड़ी को, गिरे खिलाड़ी वहाँ पे, तो देखते हैं रेफरी इस पर फाउल लेंगे। फिलहाल मैच अच्छा चल रहा है, ये देखिए रिप्ले में आप किस तरह से गिरे वहाँ पे खिलाड़ी, और हालांकि कई बार खिलाड़ी स्पीड से भी गिरते हैं और रेफरी का डिसीजन होता है वहाँ पे, और थोड़ा मुश्किल में ऐसा लगता है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो देहरादून के पेवेलियन मैदान में चल रहा है पहला सेमीफाइनल मैच, हिमाचल वर्सेस उत्तराखंड। उत्तराखंड की टीम शून्य के मुकाबले 2 गोल से पीछे चल रही है और खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं यहाँ पे हिमाचल एफसी के। तो रोमांचक मैच चल रहा है, 5 लाख रुपए इनामी राशि का ये टूर्नामेंट है, काफ़ी बड़ा प्राइज मनी है पहले स्थान के लिए, और 3 लाख रुपए मिलेंगे सेकंड प्लेस के लिए, और थर्ड प्लेस का भी मैच होगा कल, तो उसको टीम को भी, थर्ड प्लेस हासिल करने वाली टीम को भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अच्छी सुविधाएं हैं इस प्रतियोगिता में। द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पेविलियन मैदान से, ऐतिहासिक मैदान है ये, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये देखिए जो गोल हुआ था, कितना अच्छा गोल हुआ था ये, और एक किसी भी लेवल की फुटबॉल में एक बेहतरीन गोल कहा जाएगा। जिस तरह से इतना 3 डिफेंडर से घिरे रहने के बाद ये दूसरा गोल देखिए आप, 3 डिफेंडर सामने थे उत्तराखंड के और ये नेगी उनके सामने थे, नेगी को डॉस दिया उन्होंने, 2 डिफेंडर और आए लेकिन उन्होंने भी किक लेने की जो कला है, जो गोल मारा है, ये ग्लोरियस था। बहुत अच्छा फुटबॉल का मुजाहरा किया यहाँ पे हिमाचल एफसी की टीम ने, और दोनों गोल बिल्कुल ऐसे गोल मारे, गोलकीपर पांडे जैसे गोलकीपर को बीट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ तर्रार टीम है, कितना अच्छा तालमेल है। एक बार फिर दूर से प्रयास, और ये पहला मौका है कि जब इस तरह का किक लिया है इन्होंने, और अब फिर एक दाहिने छोर से, दाहिने फ्लैंक से गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि डिफेंडर उनको आज़ादी देंगे नहीं, और गेंद को टच लाइन से बाहर कर दिया डिफेंडर ने। तो बढ़िया चल रहा मैच। It has been a great show from Himachal FC so far. And as we saw the 2 goals taken beautifully by Ajay and Fahad. And they're looking for a third now, just to put it beyond the reach of Uttarakhand, who just haven't been at their best today. Weren't able to score in the quarterfinals. And are failing to score so far. With 3/4 of the game gone. Here's Manav Rawat trying to conjure up something. Plays it to Rahul Mehra. Goes for a ball in. Here could be a chance to shoot from distance. The shot has been taken, but it's just gone over the top. Nice attempt there from Tenzin Dan. And not to forget that these two sides did face each other in Group A, where Himachal beat Uttarakhand by 3 goals to 2. What a game that was. After that, Himachal also beating, in fact both these sides beating Sikkim Himalayan Sporting by 1 goal to 0. And now facing each other once again in the semis, as we see another substitution for Himalayan FC, rather Himachal FC. Jojo will be coming on in place of Abhay Gurung. Very good game from Abhay. Quite a few changes. Akash Babu also coming on. And Ajay, who got the opening goal
also replaced. 21 minutes to go. Can Uttarakhand get back into this game somehow? Madhur Rawat with the header, and this could be it. Oh, that should have been tapped into the post. My goodness, Aman Thapa had the whole goal in front of him, and that could have changed the complexion of the game. But now, on the other hand, Himachal FC have a chance to put this game to bed, and they do. My goodness, end-to-end stuff. What a counter-attack! And what was an easy goal on the other end turns out to be game, set, and match, most probably from Himachal FC. And the Ronaldo celebration has been pulled out. And Ankit, who has just come on, which is probably his first few touches of the game, scores goal number 3. What a turn of events, and Aman Thapa must be ruining that missed chance. How about this for a run and a finish? Beautifully finished there. And credit to the goalkeeper, Karandeep, for playing that ball and starting the attack as he saved it. And applause from the coach. He knows that a final is on the cards. Here are the changes that were made. Renedy also coming on. Challenger just going into traffic now, and it could go into number 4. Could get a bit embarrassing here for Uttarakhand if they are not too careful. And yes, it is. No, it isn't. It looked like it was bending into that far right corner, but it wasn't. What a move there by Manga Kapoor. And almost making it number 4, and the floodgates are opening now for Himanchal FC. Look at the way he just cut inside and didn't get enough bend on it. No chance for the keeper, that's for sure. And now no chance for Uttarakhand because Himachal FC are just finding their form. Here they come once again on the right hand side. There is Renedy. An easy pass for him, but what a piece of goalkeeping once again. Virinder Pandey, take a bow. He's done nothing wrong. He couldn't save any of the goals. But whatever he can save, he does. Without him, it could be a very high scoreline. It still could be though. The way Himachal FC are attacking. Shalendra Negi now making a run himself. How about that? Tries to play it inside, but there was no one inside to pass it to. Quite a bit of pace from the big man. Harpreet, the skipper, was running alongside him all the way. Vaman Rohidas Chari, the coach of Himachal, just making sure that they don't concede. They would want to keep a clean sheet. They have conceded 2 versus Uttarakhand before, although they did score 3. They won't want to do that again. Karandeep will want a clean sheet. Chance for a shot from distance. Nicely done by Sachin Negi. But nicely blocked as well. And this is a chance for a counter attack once again. Himachal FC are not letting anything up. Played wide by Jojo. Renedy. The substitutes combining. Renedy takes them on easily. What a challenge that is from Lalit Bisht. An absolute last this challenge. If he didn't get that right, then it would have been another penalty. Let's not forget, it could have been 4. There was a penalty miss. Here he is once again. And that is an offside call. Brilliant attacking, fluid football being played by Himachal FC. And you have to say they deserve a spot in the final after the way they've played in this tournament. Such eye-catching football. Uttarakhand not being able to take their chances. They will be doing that. That is too intricate a ball. Could have found its way to Virinder Thapa. Just a simple ball to his feet would have been easier, I feel. Especially on a bouncy ground like this.
15 minutes to go now. It's looking like it's curtains for Uttarakhand in this tournament. They will have a third place game tomorrow. If the scoreline stays this way, they will have no chance of picking up the Himalayan Cup. Time for some substitutions with quarter of an hour to play here in semi-final number 1. When the Thapa will be coming off, and he is replaced by Siddharth Rawat. And some good football from Himachal. Uttarakhand at times have shown their quality, but not as consistent as the side in black. और बहुत ज़बरदस्त मैच, तेज़ तर्रार फॉरवर्ड लाइन और दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि 3 गोल जो हैं लाजवाब हैं और हाई क्वालिटी फॉरवर्ड लाइन है। बहुत बढ़िया फुटबॉल का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ी। और जो ये टीम है हिमाचल की, इनकी जो फॉरवर्ड लाइन है, इनका जो तालमेल है वो देखते ही बनता है, और जैसे एक म्यूज़िकल कोई गेम चल रहा हो, इस तरह की फॉरवर्ड लाइन है। और उत्तराखंड की टीम जो ये सोचकर चल रही थी कि अपने होम ग्राउंड में खेलकर बहुत कड़ी टक्कर देंगे हिमाचल को, लेकिन हिमाचल की जो टीम ये आई है, इसकी जो फॉरवर्ड लाइन है, उसका जो तालमेल है, वो एक लाजवाब टीम है। और इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन ये तेज़ तर्रार फॉरवर्ड लाइन हमें देखने को मिली है। और जिस तरह से पांडे जो गोलकीपर हैं, उन्होंने शेव नहीं किए होते तो ये जो स्कोर लाइन दिखाई दे रही है 3-0, ये 5 या 6 हो जाती है अब तक। और इतने अच्छे गोलकीपर के बाद भी 3 गोल किए हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे पॉइंट दिए जा सकते हैं इस फॉरवर्ड लाइन को जो हिमाचल एफसी की है। और ये अब तक इस प्रतियोगिता की सबसे तेज़ तर्रार फॉरवर्ड लाइन है। और अभी तक स्कोर लाइन को देखकर यही लगता है कि लगभग क्या नामुमकिन सा है उत्तराखंड के लिए 3 गोल उतारना। तो 3-0 की लीड बहुत बड़ी लीड है। और क्या उत्तराखंड की टीम अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए सांत्वना का कोई गोल कर पाएगी? एक बार फिर देखिए आप दाहिने फ्लैंक से किस तरह से खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, और फॉरवर्ड लाइन इतना तेज़ खेलती है कि डिफेंडर सामने ही रहते हैं और गोल हो जाता है। 3-0 की बिल्कुल ये डोमिनेट कर रही है टीम हिमाचल की। और अब बहुत मुश्किल है उत्तराखंड की टीम के लिए कमबैक करना इस मैच में, क्योंकि जो तेज़ी है उसको कवर नहीं कर पा रही उत्तराखंड की टीम। और आप फिर देखिए, एक बार फिर मुंह बन गया है, एक बार फिर बॉक्स के अंदर गेंद आ रही है, गोलकीपर ने कलेक्ट किया गेंद को, पांडे। और एक ऐसा मैच जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा था ये बिल्कुल रोमांचक मैच होगा, और इसमें ऐसा लग रहा था कि बहुत रोमांचक मैच होगा, 1-0 या 2-1 इस तरह का स्कोर लाइन रहेगा। लेकिन मैच की जो स्थिति है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कोई इस तरह की फॉरवर्ड लाइन है, आप कह सकते हैं इतनी तेज़ तर्रार आंधी तूफान की तरह आ रही है और पूरे डिफेंडर के सामने गोल कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये टीम जो है लाजवाब है, बेहतरीन टीम है। और अब तक इस प्रतियोगिता में जितनी भी टीमें हिस्सा ले रही हैं उनकी जो फॉरवर्ड लाइन है इनके सामने कुछ नहीं है। ये हिमाचल की जो फॉरवर्ड लाइन है ये बहुत तेज़ तर्रार है, स्ट्राइकर, इनका जो कोऑर्डिनेशन है देखते ही बनता है। और एक परफेक्ट टीम है इस टूर्नामेंट की, परफेक्ट पैकेज है फुटबॉल का ये हिमाचल एफसी की टीम। और आप देखेंगे मैच में हर जगह मौजूद है प्लेयर्स, कहीं पर भी गेंद जाती है तो वहाँ पे आपको हिमाचल एफसी का प्लेयर मिलेगा, चाहे वो डिफेंस में गेंद जा रही है या मिडफील्ड में गेंद है या राइट फ्लैंक पर गेंद है, लेफ्ट फ्लैंक पर गेंद है, तो हर जगह हिमाचल एफसी के खिलाड़ी मौजूद हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और ऐसा लगता है कि इनके जो कोच हैं वामन, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कराई है, बहुत अच्छा कैंप कराया है इनको। और इस प्रतियोगिता के इस सेमीफाइनल से पहले तक किसी भी टीम ने इतनी लाजवाब अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेली है जितनी अच्छी फुटबॉल आज हिमाचल एफसी की टीम खेल रही है। और वीरेंद्र पांडे जो गोलकीपर हैं, उन्होंने शुरू में शेप किए, अदरवाइज ये स्कोर लाइन जो 3-0 दिखाई दे रही है कम से कम 5-0 दिखाई देती। तो बिल्कुल एक तरफा सा है मैच और बिल्कुल हिमाचल एफसी की टीम डोमिनेट कर रही है। उनकी जो स्ट्राइकर है, उनकी जो फॉरवर्ड लाइन है, जैसे संगीत की तरंगें चलती हैं उसी तरह से जब वो अटैक करते हैं तो देखते ही बनता है। और बिल्कुल बढ़िया फिटनेस है, बढ़िया कदकाठी के खिलाड़ी हैं और जो तेज़ी है, जो हम फुटबॉल की अगर बात करें तो एक बहुत हाई लेवल का मैच चल रहा है ये। और इस मैच को बिल्कुल ऊंचाइयों तक, फुटबॉल की जो ऊंचाई है वो इस मैच में दिखाई दे रही है। हिमाचल एफसी की टीम जिस तरह की फ़ुटबॉल खेल रही है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा एक देहरादून के लिए कह सकते हैं हम, देहरादून के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। जो फॉरवर्ड लाइन है, जो स्ट्राइकर हैं, जिस तेज़ी के साथ खेल रहे हैं और जो गोल मारे हैं, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट गोल मारे हैं हिमाचल की टीम ने। एक भी गोल को लेकर ये नहीं कह सकते कि डिफेंडर से चूक हो गई या बॉल गोलकीपर के दस्तानों से छिटक गई। सारे गोल बिल्कुल 100% 100% गोल मारे हिमाचल की टीम ने। और आज हिमाचल एफसी की टीम की जो स्ट्राइकर हैं, उन्होंने फुटबॉल क्यों पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलर फुटबॉल क्यों है आज दिखाया है। और आज अगर वर्ल्ड फुटबॉल में मेसी, रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी जाने जाते हैं तो उनका स्कोरिंग का एक रिकॉर्ड है। और देखिए आप एक बार फिर हिमाचल के पास गेंद है, हिमाचल के खिलाड़ी वहाँ पर जरूर गिरे हैं। अब थोड़ा सा प्रेशर डिफेंडर के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रही है टीम, उत्तराखंड की टीम अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। और मैच शुरू होने से पहले यही लग रहा था सभी को कि उत्तराखंड ने 2 चेंज भी किए हैं और उत्तराखंड की टीम हिमाचल एफसी को कड़ी टक्कर देगी। लेकिन मैच जिस तरह से शुरू हुआ और जिस तरह से हिमाचल की फॉरवर्ड लाइन लगातार, जैसे कहते हैं ना, एक जंग का मैदान बन गया है ये। और इस मैदान में जो गोले बरसाए जा रहे हैं वो हिमाचल की ओर से ही बरसाए जा रहे हैं। हिमाचल की टीम लगभग डोमिनेट कर रही है, पूरा बॉल पोजीशन है। और अब ये देखिए आप, पेनल्टी बॉक्स के बाहर से फ्री किक लिया जाना है, तो क्या फ्री किक पर क्या कुछ होता है वो तो दिखाई देगा आपको। लेकिन बहुत अच्छा मैच चल रहा है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हिमाचल एफसी ने पूरा, जिसे कह सकते हैं कि मैच का जो पूरा मज़ा है दर्शकों को लिए रखा है। और फुटबॉल में जब गोल होते हैं और इस तरह के गोल होते हैं, इस तरह की फॉरवर्ड लाइन होती है, तो मैच देखने वाले लोग भी अपनी नज़रें हटाते नहीं है मैच से। तो फिलहाल फ्री किक के लिए गेंद को रखा जा रहा है। स्कोर लाइन 3-0 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पेवेलियन मैदान में चल रही है ऑल इंडिया फुटबॉल कप, द हिमालयन कप, और जिसका पहला सेमीफाइनल चल रहा है। देखने वाली बात यही है कि क्या इसी स्कोर लाइन पर मैच खत्म होगा। अभी 10 से 11 मिनट का समय और बाकी है, और क्या उत्तराखंड की टीम एक गोल उतार पाएगी या एक और गोल हो सकता है। जिस तरह का खेल चल रहा है वो अभी आने वाले समय में मालूम चलेगा। फिलहाल गोलकीपर थोड़ा मुश्किल में है और इनको तो ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत पड़ी नहीं गोलकीपर को, क्योंकि ज़्यादा अटैक हुए नहीं है। पहले हाफ में ज़रूर 1-2 मौके आए थे जब गोल हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है मैच की आप खुद देख लीजिए। और बड़ा अच्छा मैच है और फुटबॉल आयोजन लाजवाब है देहरादून में। सारी जो व्यवस्थाएँ हैं बिल्कुल एकदम उम्दा हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। लाइव टेलीकास्ट में तो मैच हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो लग नहीं रहा है कि ये कोई उत्तराखंड में ऑल इंडिया फुटबॉल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई आई लीग या हम कोई इंडियन सॉकर लीग का कोई मैच देख रहे हैं। अच्छा है। हिमाचल एफसी की फॉरवर्ड लाइन, जो उनके स्ट्राइकर हैं, उनका खेल लाजवाब है और बहुत बढ़िया है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो उदयमान खिलाड़ी है, जैसे बॉल बॉयज़ यहाँ पे मैच देख रहे हैं हॉस्टल के, तो बढ़िया है, एकदम परफेक्ट। And with 8 minutes to go, they're trying to get a number 4. Himachal FC. Kennedy standing over this, as is Joel. And let's see if Kennedy can put this one in. Hits the wall, needs to be better than that. They will have another chance. Joel is offside though. And it's been such an incredible time here at the Himalayan Cup over the past few days. Probably onside there. And now we're coming towards the end of this fabulous tournament. I mean, we would like to thank our sponsors once again: ONGC, Indian Oil, Oho Radio, Mittel TMT Bar, Gale, MSDC, and Corbett FC for all their support throughout the Himalayan Cup, which has been an absolute success. As we come to the closing stages here in Dehradun, beautifully done on the left hand side, and keeps going, and the shot from distance will go out for a corner. Good skill there from Kuntal. Had an option to play it wide but decided to go himself. Can be given the freedom to do these kinds of things when you're 3-0 up. And what an emphatic display it has been from Himanchal FC. Can they get number 4? Renedy over the ball. Short corner practice, another delivery inside, but nicely cleared away. Shailendra will keep this on chase. Has become a striker now after they went 2-0 down.
Just a matter of time before Himachal FC can officially go through to the final of the Himalayan Cup. Who will they face? They will find out by the end of this evening as we see semi-final number 2, and as the number 2 himself, Ankit, was looking for his second goal of the game. Mera plays it to Rawat. Back towards Mera, a bit too much on that, but he can try and get something on. Brilliant tackle coming in from Lovepreet. No love lost between those two. Play on, says the referee, because that was a fair challenge. Not afraid to give penalties, as we've seen Jatinder Singh. Looks like there will be a bit of attention required for Rahul Mehra. These two sides, as I mentioned, played each other in the group stage. It was 3-2, and Himachal FC have done the exact same. Score 3 goals, but they have tightened their defense, and Uttarakhand have not been able to do that, conceding 6 goals in their 2 matches versus Himachal FC, and that has been the difference. The attacking quality of HFC has been absolutely incredible. 6 in their 2 games versus Himachal, rather versus Uttarakhand, 1 versus Sikkim Himachal Sporting, and also 1 versus J&K in the last game, which was their quarter final. And Fahad is the man of the match from Himachal FC. What a game he had. So skillful, so intricate, so incisive as well, and that goal had absolutely all those qualities. One of the best goals of the tournament so far, and he is a deserving man of the match for this semi-final. Three minutes to go as they look for goal number 4. Renedy puts the ball into the box, a bit too much on it. Wherein the Pandey will be there. Here's Aman Thapa, who, if he put that ball into the back of the net, it would have been 2-1, and then the game would have had a different tone to it. But it wasn't meant to be. Himachal FC have been the better side. Here is Rahul Mehra. Tenzin plays the ball through. It is a good ball, but the first touch is not the best one from Aman. And it will be a corner for Uttarakhand. Siddharth Rawat will take it. The deliveries have not been the best from Uttarakhand. Shouts for handball, but I don't think that was the case. No, it wasn't. Good call by the referee. It's been a very good game from him. And they have enjoyed the game as well. Some of them will be back after a quick lunch break, as will we, for the 2 p.m. kickoff of semi-final number 2, which promises to be a cracker as the Assam Rifles take on the Garhwal Heroes. Last minute of the 90 now. Uttarakhand will be happy with the way they have played this tournament, but definitely not this semi-final. Just didn't come to the party, and the quality of
Himachal FC have overshone their opponents as they will get a chance to play in the final of the Himalayan Cup. Good header by Shalendra. There is Mehra, who I feel should have been playing centrally. But now that will be to no avail. Six minutes of added time at the end of this semi-final number 1, which means there's more time to get another goal here. But not as long as Virendra Pandey is around. A good throw from him. The run down the left wing from Joel was a good one. और लगभग आखिरी समय चल रहा है मैच का, लेकिन मुझे लगता है इंजरी टाइम काफ़ी है और अब मैच की जो स्थिति है 3-0 की लीड है, डोमिनेट कर रही है हिमाचल की टीम। उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की टीम को आज काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस तरह वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि अपने ग्राउंड में कुछ बेनिफिट रहेगा उनको यहाँ पे खेलने का, उसका कोई लाभ नहीं मिला और शुरुआत से ही दबाव में ला दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप भंडारी कोच काफ़ी निराश होंगे आज अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रही थी टीम और ऐसा माना जाता है कि होम ग्राउंड में खेलने का लाभ मिलता है टीम को। और ये ग्राउंड तो अनइवन है थोड़ा सा, और हिमाचल के कोच यही कह रहे थे कि ग्राउंड में थोड़ा परेशानी हो सकती है हमको कंट्रोल करने में, क्योंकि ग्राउंड अनइवन है। लेकिन बहुत अच्छा फॉरवर्ड लाइन, बहुत अच्छा खेल और बहुत अच्छे गोल हुए आज और अच्छे लेवल की फुटबॉल आज देखने को मिल रही है। तो अभी भी जो बचा हुआ समय है इसमें देखते हैं कुछ और हलचल होती है। देखिए आप, ये कंट्रोल कर लिया हिमाचल की टीम ने और ये बढ़ाई जरूर है गेंद, लेकिन इस बार कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहाँ पे इस किक को लेने के लिए। तो इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में लगभग मैच का परिणाम तय सा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो समय बचा हुआ वो इंजरी टाइम का बचा हुआ है। तो 90 मिनट का खेल पूरा हो चुका है और ये 6 मिनट की इंजरी टाइम जो दिया गया है इसमें से भी लगभग 2 मिनट होने वाले हैं। तो हिमाचल एफसी की टीम, उनकी जो फॉरवर्ड लाइन है बहुत बेहतरीन खेल दिखा रही है और अभी भी आप देखिए गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंडर उनसे जूझ रहे हैं और अच्छा तालमेल है, गेंद पर गजब का नियंत्रण है। ये फॉरवर्ड लाइन लाजवाब है और इन्होंने जो गोल किया है वो भी एक हाई लेवल फुटबॉल का प्रदर्शन किया है आज हिमाचल ने, और इस दफ़ा ज़रूर गेंद छीनी है। और जिस तरह का खेल दिखा रही है हिमाचल एफसी की टीम, निश्चित लग रहा है कि फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि कोई चमत्कार ही होगा जो 3 गोल कर सके। फिलहाल स्थिति जो है 3-0 की लीड, एक डोमिनेट कर रही है टीम हिमाचल प्रदेश की और ये टीम पहुंच जाएगी फाइनल में जो स्थिति है। हालांकि अभी रेफरी की विसिल जब तक ऑफिशियली बजती नहीं। एक बार फिर देखिए आप, बाएं छोर से एक बार खिलाड़ी निकल गए हैं। यहाँ पर खतरा हो सकता है, आखिरी समय में गेंद को गोल लाइन से बाहर किया शायद। अब देखने वाली बात है, फ्लैग किक का इशारा किया जा रहा है, कॉर्नर लिया जाएगा बाएं छोर से। तो ये मैच, इसका परिणाम लगभग तय लग रहा है और जो समय अब बाकी है इस समय में कम से कम उत्तराखंड के लिए 3 गोल उतारना तो बिल्कुल कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो ये टीम पहली टीम बनने जा रही है हिमाचल एफसी जो फाइनल में पहुंचेगी और निश्चित तौर पर ये डिज़र्व करती है टीम फाइनल के लिए। 3-0 की एक लीड के बाद लगातार हमले और कोई उन्होंने अपने खेल में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया है कि चलो 3-0 से हम आगे हैं तो थोड़ा कैजुअल लें। पूरा गेम की जो स्पीड है उसको बना के रखा है, मेंटेन करके रखा हुआ है और ये एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी की निशानी होती है, एक बेहतरीन टीम की निशानी होती है। आप देखिए इंजरी टाइम में भी खिलाड़ी थ्रो इन को लेकर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि थ्रो इन हमारा है, ये सामने वाली पार्टी का है। तो इस तरह की फुटबॉल के लिए जुनून होना चाहिए खिलाड़ियों में, और जब खिलाड़ियों के अंदर जुनून होता है जीत का तभी उनका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और तभी दर्शकों को फुटबॉल अच्छा देखने मिलता है। फिलहाल गेंद चीनी जरूर है, लेकिन उत्तराखंड की टीम ने आज कह सकते हैं हम अपने होम ग्राउंड में दर्शकों को लगभग निराश ही किया है और कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन दिखा नहीं। 2 चेंज जरूर किए गए टीम में, लेकिन ये चेंज टीम को इसका कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो खिलाड़ी जो चेंज किए गए वो टीम के साथ एडजस्ट नहीं हुए, क्योंकि इतने लंबे समय से साथ नहीं खेल रहे थे। और कई बार होता है कि जब फॉरवर्ड लाइन में खिलाड़ियों को चेंज किया जाता है तो उनका जो बाकी खिलाड़ियों के साथ तालमेल है उतनी जल्दी बनता नहीं है, इतने कम समय में बनता नहीं है। और हिमाचल एफसी की टीम आप देखिए बिल्कुल जुझारू टीम है और लास्ट मोमेंट तक पूरा 100% एफर्ट लगा रही है टीम, तो बहुत बढ़िया कर रही है हिमाचल एफसी की टीम। 3-0 की एक अच्छी लीड के बाद भी उन्होंने खेल को बिल्कुल अपने पकड़ में रखा हुआ है, डोमिनेट कर रहे हैं, पोजीशन उनके पास है और अटैक उनके बन रहे हैं, मूव भी बन रहे हैं, खिलाड़ी वहाँ पे गिरे हैं। तो फाइनल में पहुँचने वाली पहली टीम बन जाएगी हिमाचल एफसी। निश्चित तौर पर बढ़िया लाजवाब प्रदर्शन, पेवेलियन मैदान देहरादून का
और ये ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर ईस्ट बंगाल, मोहन बागान जैसी कई टीमों ने मैच खेले हैं। डूरंड कप, फेडरेशन कप जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पर मैच हुए हैं। तो अच्छा है, हालांकि मैदान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम, थोड़ा सा मैदान अनइवन है, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए एक जैसा होता है परिस्थितियाँ। और बहुत जल्दी एडजस्ट किया हिमाचल ने, और अपनी इंटरव्यू में तो उनके कोच ने यही कहा था, वामन ने, कि मैदान में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है एडजस्ट करने में, लेकिन लाजवाब खेल दिखाया आज। 3-0 की एक निर्णायक जिसे कह सकते हैं लीड है, और अब ये इंजरी टाइम भी लगभग अपने समाप्ति की ओर है और 1 मिनट का समय बचा हुआ है। तो इस बचे हुए 1 मिनट में क्या कुछ होता है आपको दिखाएंगे हम, लेकिन फिलहाल 3-0 की एक अच्छी लीड जिसे कह सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि फाइनल में पहुंच गई है हिमाचल एफसी की टीम। बस रेफरी की विसिल बजने का इंतज़ार है, मैच समाप्त होने की घोषणा होनी बाकी है। मैच का परिणाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्कोर लाइन 3-0 इन फेवर ऑफ हिमाचल एफसी लियो। So, with the semi-final one coming to a close, it has been a dominant display from Himanchal FC. And as my co-commentator MS Negi G has alluded to the fact that semi-final number 2 will also be a good one, as Virendra Pandey fittingly takes another ball into his hands. What a tournament he has had. He will be disappointed, but he can hold his head high, as can the rest of the Uttarakhand side. But now it's all about Himachal FC and how they have been incredible and have solidified their spot in the final. And with that, the final whistle comes to a close, and semi-final one concludes with Himachal FC beating Uttarakhand FA by 3 goals to 0 in what has been an immensely impressive performance. They have sealed a spot in the final of the Himalayan Cup 2022 and will be waiting as to who they will take on in the grand finale. That's Assam Rifles will take on Garhwal Heroes, and we will know. So full time here at the Pavilion Ground is Himachal FC 3 as they go to the final after beating Uttarakhand, who did not manage to score.
यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं सेरेमनी, अवार्ड जो दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच। और आज आपने एक बेहतरीन मैच देखा। हेलो हेलो हेलो, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बारी आती है प्लेयर ऑफ द मैच की। आज के इस बेहतरीन मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पे देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा उत्तराखंड के एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल के जो एंकर कहें या ऑनर भी कह सकते हैं आप, पोल खोल भगोड़ा जी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ और आपके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो आज यूट्यूब के बहुत सारे यहाँ पर आए हैं रिपोर्टर, आप सभी का वेलकम है। तो प्लेयर ऑफ द मैच, आज के इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जिस खिलाड़ी को दिया जाएगा वो है जर्सी नंबर 12 फहद। ये खिलाड़ी आ जाएं, जर्सी नंबर 12 फहद आ जाएं प्लेयर ऑफ द मैच। तो ये शानदार मैच 3-0 की शानदार डोमिनेट करते हुए हिमाचल एफसी ने फाइनल में प्रवेश किया है। और फाइनल में प्रवेश किया है तो प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया जाना है। और प्लेयर ऑफ द मैच आज के इस मैच के फहद इनको देंगे। पोल खोल भगोड़ा एक फेमस यूट्यूब चैनल है और आजकल उत्तराखंड में यूट्यूब चैनलों की बहार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को बहुत सारी बधाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेला। तो फाइनल में पहुंची है टीम, आप देख रहे हैं ये प्रेजेंटेशन। तो फिलहाल प्रेजेंटेशन सेरेमनी से इतना ही। फहद थोड़ा हमारे साथ आइए आप। फहद बहुत अच्छा खेला आज आपकी टीम। आपके कोच कह रहे थे कि अनइवन ग्राउंड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या कहेंगे? आपने गोल किया, आपकी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो किसको श्रेय देंगे आप? आज अच्छा खेले आप। No, it was a good match, and our team is playing really well. It hard to play in this ground, but we are doing good. बेस्ट ऑफ लक फॉर What? बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल। Thank you. वेलकम। तो ये थे फहद जिन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और इनको दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच। आप हमारे साथ बने रहिए, अब बहुत जल्दी दूसरा मैच शुरू होने वाला है, तो आप देखते रहिए और लाइव दिखाएंगे आपको। तो आप देखते रहिए, बने रहिए, अब दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। गुड बाय। धन्यवाद नेगी जी।